वालेकुम सलाम हसन प्लीज। जी सर, आपकी खैरियत से? बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह। just give me 5 minutes, sir. अच्छा, बैकग्राउंड नॉइज का जरा ख्याल रखिएगा, बैकग्राउंड नॉइज आपके। चलिए, इतनी देर में मैं देखता हूँ दूसरे कौन सा है। अम, जरई रामदास, आपका हो गया था लास्ट टाइम? ओके, सर हम लोग लास्ट में क्यू में लास्ट में ठीक है। जिस डाउनलोडिंग आप शुरू करें, अगर आप शेयर कर सकते हो ना। लेट्स सर स्टार्ट मैं विद एक यू। फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ तो मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ अच्छा, आप कम्प्लीटली, भी प्रिपेयर्ड नहीं है। बिकॉज लास्ट में छूट था इसलिए। अच्छा, और कौन मौजूद है यहाँ पे? सुपर बटलर के हैं। नहीं मौजूद हूँ तरसील, तो प्लीज। यस सर। यू कैन स्टार्ट विद योर तरसील नेम्स। अस्सलाम तरसील, वालेकुम सर। कैसे वालेकुम हैं सलाम। आप? बस खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। जस्ट गिव मी अ सेकंड सर। ओके, परफेक्ट। तो तरसील सिस्टम्स, सो कैन आई शेयर माय स्क्रीन सर? या होल्ड ऑन, लेट मी अलाउ दैट, होल्ड ऑन। ओके, नाउ यू कैन शेयर। But it is visible sir? यस, प्लीज गो अहेड। So gentlemen, lots of time businesses is done as packages are sent, messages are sent, and employees leave to deliver things or visit customers to take orders and collect cash. Businesses depend on it. But do you really know where the driver is on any given time? The answer is no, because there are traffic issues, roadblocks, weather. So, what if there was a way to know exactly where your driver is? Is he going to make it or not? We solve that problem. A mobile application that not only empowers the drivers with customer locations, optimized routes, and customer history, a cloud web panel that facilitates business owners to see where their drivers are in real time on the map. They know in advance whether drivers are going to make or not. It reduces loss of wasted fuel and time. It increases staff efficiency by 13% more visits and thus increased revenue. And live data punching by drivers saves back office costs and trees by making processes paperless. Furthermore, transactional notifications via WhatsApp eradicates 100% of revenue leakages. This is our founding team. Me, Mohammed Naeem Star, as a product leader, had experience of ERP development and customization of 20 years, but had also privilege to experience the running a water delivery business here in Lahore in Pakistan. And basically that was the place of idea behind the idea of Tarsil was born. And when I face in real time the challenges of field operation, managing drivers and etc. And in 2020, we decided to scale this application for millions of those businesses out there who are facing same challenges we solved for ourselves initially, but we had to pivot and we uh, went for making a SaaS platform. So currently, these are our stats. Though we just recently increased our price by more than 100%, uh, but our existing customer base mostly is on 1,000 rupees per user per month. We sell our monthly subscriptions per user, and average users per company we have onboarded are 5 average users per company. Total 8.4 million of PKR revenue we have generated thus far, and
221 companies we have served, 149 basically now are active companies, 237 in active trials, 514 companies in opportunity basket, 44 cities in Pakistan plus 2 cities abroad, and we have sold 8,249 units, what we call the monthly subscription units of, they can be of a user subscription base or our premium modules, finance and inventory. Those are also, we have a well architected reviewed by AWS, referred to NetSol Technologies. They conducted our AWS review that made us unable to, now we are ready to onboard a big number of users. And we also, so this is our process where we we give trials for 14 days, and then initial training material and documents are provided, and CSMs are call them for conversion during their trials and later on. And then onboarding system works is followed, and tailor configurations, and on approval, customer gets the smooth operation, and then our retention engine works, where we provide them level 1 and level 2 supports. This is our serviceable obtainable market. We have discovered that 2.9 million micro and small medium businesses in only Pakistan, they have field operation. They have count of 2 to 20, 2 to 50 headcounts, and they are struggling with their field operations. This is what our roadmap is. Currently, now we in for 2025, we are seeking to secure our investment to scale our customer success team and our operations, in fact. And we are going to launch 2 different AI bots and digital payments with a B2B2C customer app for end users. Our GTM strategy is digital first, SEO and targeted ads and referrals, and inbound marketing strategies. Industry leaders, we are going to collaborate with Punjab Bank with an aggregator account to be aggregator for the payments of our suppliers, our customers. International expansion through regional and step-by-step we have already planned. And there are different competitors like JungleWorks and Salesforce. We have selected a niche with for many lower price and very specific features fit in our Pakistan's culture or third world countries culture or a micro business culture, in fact. Then there are companies who on the right side, bottom side, they are only tracking companies, and then left 5 minutes. Solutions. We have competitive advantage that offline first, our mobile application works offline and off grid as well. Hyper scalable architecture, focused micro business niche, and 80% lower rates. 1,000% ROI we claim to give them a value of 1,000% against the investment they make on software. And in diverse industries, we have proven adaptability. We have seen that. These are our financial projections. And currently, basically, I could not change here, but we are seeking a more amount, $215,000. But these are our units which we sell, basic user subscription per month, and add-on financial module per month, add-on premium production module, SMS package, WhatsApp package. And for future revenue streams, we are going to start our customer app online shop, digital payment services, Shopify and WooCommerce integrations. Currently, we have integrated FBR. Yeah, I think now, I think about beyond 5 minutes, and these are all details what you're covering now. Yeah. These are our Yeah, go ahead. challenges we're seeking in our next 1 and 2 years. And here are customer testimonials, which I wanted to share that how customers are using our application and they are loving this thing.
And this is our investment seek for 10% equity. Purpose is scale customer success team for accelerated growth to 100 million MMR. So, Great. and thanks. These are Okay, the thank you. pictures where I think in a the way we should key stop. was born. We should stop. Then it really runs too long. Sure, sir. Okay. Thank you. Okay. Thank you very much. Questions? So what's your go-to-market strategy? How do you find new customers? Currently, sir, we are following Facebook ads. We are running Facebook ads, and our strategy is digital and inbound strategy basically through SEO, through referrals, through our Facebook promotions. On Facebook, we have applied conversion and their Pixel APIs. We have managed our server for conversion APIs. And currently we are receiving 10 trial signups per day, and on average 300 to 400 signups per month we are receiving. Currently, our capacity, we have 3 persons in our customer success team. And last month, November, we closed 18 new companies onboarded. Three of them subscribed for the year with their team of on average of 5 size. Okay. So, Follow-on question ये है कि जो what you provide, it's pretty much available free also, right? On iPhone, or I'm sure on Android, people can say find my person, and it just gives them where they are, what they are. The Google Maps gives you free directions in Pakistan. It knows which route to take. It knows where to go and all that stuff. So what is it that you are doing differently from what's already available free to customers? so basically, this is an added value, our field operation management, the mobile app. And this added value is attached to our ERP, micro ERP system, which we have. नहीं तो एडेड वैल्यू का थोड़ा सा कर देना. व्हाट आर द टू टॉप एडेड वैल्यू? अगर मैं कस्टमर हूँ आपका, जी सर. जी तो सर. क्या ऑफर कर रहे हैं ऐसी एडेड वैल्यू? जी सर. मेरी टीम जो है वो जब डिजिटल हो जाती है, मोबाइल पे चले जाती है आपकी टीम, जो कि डिलीवरीज देने जा रही है डेली या कस्टमर विजिट्स पे जा रही है, उन्होंने जाके उसी मोबाइल ऐप पे डाटा पंच करना है. सुबह उन्होंने डाटा डाउनलोड कर लिया कस्टमर्स का, रूट्स, विजिट्स, एवरीथिंग, एंड कस्टमर स्टेटस भी, उनके स्टॉक्स भी, उनके बैलेंसेस भी एंड एवरीथिंग. और वो ईच कस्टमर के पास जाते हैं, ऑफलाइन रहते हुए उनकी बिलिंग बनाते हैं, उनकी पेमेंट कलेक्शन तो की ये रिसीट्स. बेसिकली मैनेजमेंट सिस्टम है कि Right. फील्ड अगर मेरी ऑपरेशन. डिलीवरी है तो उसको फिर वो मैनेज कर पाते हैं जी कि बिल्कुल कहाँ सर. जाना है, कौन सी डिलीवरी करनी है, और ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि भाई कहाँ पे कितना टाइम लगा, जी वगैरह बिल्कुल. वगैरह. और उससे Yeah. 13% उनका रेवेन्यू इंक्रीज होता है, और बैक ऑफिस कॉस्ट उनकी जीरो हो जाती है, क्योंकि सही. डायरेक्टली डेटा जो अब पंचिंग जो है वो उधर से हो रही है. समझ ठीक आ है. गई. नहीं समझ भाई, आ गई. या Thank you. सही, बिल्कुल सही. आपने कहा था कि 8,000 यूनिट्स हैं, जी. और फिर आपने दिखाया 2024 में 4,000 यूनिट्स. सो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस? 2024 में हमने डबल किया है उससे, जो पिछले 3 साल में हमने किया तो था. अच्छा, 8,000 टोटल है टू डेट, आप ये कह रहे जी हो? सर, ये टू डेट है. तो ये पर मंथ ऐड करते जा रहे हो इसको? दैट्स हाउ यू डूइंग इट? ये सर पर मंथ पैकेजेस हैं नहीं देखे ना, हमारे. सब्सक्रिप्शन देखी जाती है कि भी अभी जैसा आपके नवंबर आपने कंप्लीट किया, जी सर. नवंबर में कितने सब्सक्राइबर्स थे, आपके यूजर्स थे, ठीक है, यूनिट्स जी थे. सर. नवंबर फिर में उसमें 90 देखा जा उस बात सुनो, फिर उसमें देखा बताइए. जाता है कि भी आपका चर्न रेट क्या है, कितने आप लूज कर रहे हो और कितने नए ऐड कर रहे हो. सर ये जो बहुत पिछले इंपॉर्टेंट साल फैक्टर का है. आप थोड़ा बताइए पिछले जरा. साल का जो हमारा चर्न था वो 18% था. अच्छा. जी सर. और अब जो है जो लास्ट 6 मंथ से कितना देख रहे हो चर्न जो है? इसमें सर राउंड अबाउट 20 के राउंड अबाउट है, इससे ज्यादा नहीं है. 20% से? तो और ये इसमें भी एक इंसाइट मैं ये शेयर कर दूं कि हमारा जो चर्न होता है, 90% से ज्यादा जो चर्न है ना, वो होता है जो फर्स्ट 2 मंथ्स में ऑन बोर्डिंग में फेल हो रहा है. अच्छा. जो एक दफा ऑन बोर्ड हो रहे हैं वो फिर छोड़ नहीं रहे हमारा सोल्यूशन. अल्हम्दुलिल्लाह. सही. 4 साल रफीक, से आपका किस, कोई सवाल?
जी मैं मेरा सिर्फ एक सवाल था। आपने डिजिटल पेमेंट्स का कुछ जिक्र किया था, उसका जी सर। थोड़ा सा बताएंगे आप क्या? जी सर, हम ना B2C ऐप फॉर आवर एंड कस्टमर, यानी कि जो हमारा कस्टमर एक बिजनेस ओनर है उसके कस्टमर्स के लिए जो मोबाइल ऐप है ना, एंड along with that a website, basically this is flutter based module we are going to do, we have developed, basically it is in beta, and we have already given to two customers for QA purpose, for testing purpose, and that application we are going to launch in January. We are going to give it free to our existing customers, and in future we are going to give them payment option to their end user. uh, in first version we are going to give, they can make sale orders, and they can track their orders on the map, and then they can receive receipts and their financials, they can pull their ledgers and invoices. ठीक ठीक है, Currently, समझ आ गई। ठीक है, that's excellent. Okay, sounds good. Any other question? तो ये अब बस लास्ट सवाल था, वही जो आपका रेवेन्यू जो है लास्ट मंथ का और एकदम से ग्रो किया, वो क्या हुआ? वो ये जरा सब रेवेन्यू चार्ट शो करेंगे, रेवेन्यू जी चार्ट सर, दोबारा पांच दिखाएं। कंपनीज ना वो एनुअल की आ गई हमारे पास, नई जो है। टोटल 12 कंपनीज थी, सॉरी 17 कंपनीज थी इस मंथ में, अगस्त में। तो अच्छा, लास्ट लास्ट जो हमारा नवंबर गुजरा, वो ये मेरा ग्राफ थोड़ा पुराना है। लास्ट जो हमारा जो नवंबर गुजरा, इसमें हमारी 18 कन्वर्जन है, दिस इज हाईएस्ट अप वी कैन अचीव अप टिल नाउ। तो ये 899 के जो शो कर रहा है, ये क्या है? जी सर, ये ये 8 लाख सर। 8 लाख रुपए, अच्छा सही है। ओके, थैंक यू वेरी मच, इज हेल्पफुल। और ये प्रेजेंटेशन आपने अपलोड भी की है, ठीक है ना? जी सर, वो थोड़ी पुरानी है सर, ये अपडेटेड है। ये अपडेटेड है, फिर भी अगस्त शो कर रही है, कैसे? आप इसको लेके आए, नवंबर तक I will लेके आए भाई definitely इंसान। update it, sir. I will give you an updated very soon, ओके, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. तो एक कुछ ले लेते हैं, 1 मिनट स्कोरिंग को कंप्लीट करने का। और नेक्स्ट जो तैयार हो रहे हैं वो मोटो वेस्ट, मोटो वेस्ट है यहाँ पे कॉल पे? जी अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, मैं नहीं, जा ये तो सकता हूँ? हाँ चले, आप पे मैं आप लेके आए, ठीक है। थैंक प्लीज शेयर योर स्लाइड्स। प्लीज लेट मी नो व्हेन द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ अस। Yeah, it is visible. Just wait for 1 minute, please, and then श्योर। we'll get started. अब्दुलरहमान, आपका मैसेज अभी मैंने सुबह देखा जो आपने उस दिन भेजा था। So I didn't even see your message. You should have raised चलिए, your hand. ठीक है, कोई आप बात शुरू करें जी। ठीक है, प्लीज शुरू करें। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन अगेन ऑन ये सैटरडे प्रॉब्ली morning in the US. So myself Abdurrahman Shamsi, and allow me to share a few stats with you. So here's Pakistan, a beloved country, a country with a population of more than 240 million people, has a mere 21% financial inclusion ratio compared to a global average of 69, and it ranks amongst the lowest in the countries as per the global Findex database, with more than 100 million unbanked adults and a grave gender disparity ratio. Yet, when we talk about financial wellness and financial inclusion, we often disregard the youth of Pakistan, which forms more than 60% of Pakistan's population, with more than 35% of them comprising of students. For perspective, this number is greater than the combined population of some of the largest and the developed countries of the world. So here's the problem. The legacy institutions, they don't see this youth and the student population as bankable until we become part of the working population. Myself, I'm a Gen Z and a recent graduate from LUMS as well. Moreover, we as in the youth and Gen Z, we have different and unique needs compared to the adult and the working population, due to which we are left with generic one size fits all sort of products, financial products and services, resulting in the fact that we as a population segment, we are left with low levels of financial literacy and awareness, and which should not be coming as a surprise by now. So just to summarize, all these factors, they result in the fact that the youth of Pakistan, which forms a major and a very important segment of the population, remains unbanked and largely financially underserved. Well, as Bill Gates has rightly mentioned, banking is important. Banks are not. So presenting to you the new age of banking for the new age of population,
Paymo, Pakistan's first mobile wallet for the Gen Z student population. With Paymo, we are on a mission to raise a new generation of Pakistanis who understand the fundamentals of personal finance with a strategic focus on the financial well-being. So we target the youth of Pakistan by focusing on students, and students form the largest subsegment of the Gen Z population and share homogeneous needs as a user group as well. So we achieve a mission by firstly acquiring students through creating cash-light educational campuses by digitizing almost every cash touch point a student experiences through the proprietary features which we have developed by closely studying and understanding the needs of the user segments. And then secondly, we partner up with fintechs operating in different verticals while maintaining our own expertise in the payments vertical to allow user base access to a wide range of financial products and services, ranging all the way from investing, lending, insurance products as well. And then lastly, for something which is very close to my heart is imparting financial literacy in ways which is suited to the Gen Z style of learning, which is definitely not the Rata way of learning through the black and white text. So the underlying magic lies in a go-to-market strategy. We focus on educational campuses and acquire students, which we found in clusters by digitizing the major cash touch points, which I already just touched upon. Upon doing that, by taking a top-down and bottom-up approach, this allows us two very important benefits. Firstly, is a very low customer acquisition cost, and secondly, is a very high customer retention ratio. And then lastly, we provide open loop use cases to increase the lifetime value of the users we have recently acquired. So we have a few revenue models. Currently, we operate on a transaction-based model whereby we charge a certain percentage from the user when they top up their mobile wallets, and from the vendors when we settle them their amounts. We also earn on Sharia compliant float returns model whereby जो भी users हमारे साथ अपना balance रखवाते हैं उस पर हम लोग earn करते हैं. We also have a freemium plan for each of the feature that you just saw on a couple of slides earlier. Projected revenue streams also include banking as a service and banking as a platform model whereby we charge to the fintechs on an affiliate model, on a commission model that we have partnered up with. These are not just any lofty claims which I'm making in front of you right here, right now. These are backed by actual numbers. To date, we have more than 5,000 plus users, have processed more than 120.8 million in transaction volume, and have more than 50 plus vendors on board. And all of this is year to date. So the market for this is huge as there are no student and teen-based wallets in Pakistan. So this market remains largely and relatively untapped. We plan to take a top-down approach, starting from higher education institute first, 18 plus, and then moving our way down to inter and A-level colleges and primary and O-level schools. So similar examples of student and teen-based wallets have been massively successful, especially in comparable economies like India and Brazil, whereby we have the trailblazing examples of FamPay, YPay, Akudo, and QPay, who we closely benchmark for our own growth and marketing strategy as well. Now here's the second secret ingredient to what we're building right now. Up until now, we've been operating as a closed loop wallet कि जिसमें user पैसे डलवा सकता है, निकाल नहीं सकता. But with the traction and the product market fit that we have gained over the year, we have now formed strategic partnerships, one-off partnerships with these commercial banks that you can see on the screen, which allow Paymo to operate just as a bank with as many features, probably more, without actually being a bank. Today, my ask is $500,000 to fuel our expansion into the open loop 5 minutes. as we plan to launch into the open loop next quarter. The expenditure outlay is here. We just also would like to mention that we've recently raised a grant of PKR 49 million from Karandas, Pakistan, and $40,000 from Visa Foundation to support the initiative that we're doing right now. Myself, Abdurrahman Shamsi, I'm the founder and CEO. With me, I have Khuzaima Saeed, who is also my batchmate, co-founder and CTO. We are advised and mentored by industry professionals, including Shesha Hassan, who is the founder and CEO at Kalpe, and Hashim Ali, who is the founder and CPO at Moavin. That is all from my side. I'm open to any questions now. Thank you. Great. So I have two questions. What's your current ARR? What's your gross margin? And then also, once the students are done with their education, what do you do with them? Do they leave you? What happens? Right, wonderful question. So two parts, technically ARR कितना है और gross margin कितना है. So right now, if you Naeem Saab, if you have the understanding of the payments vertical, especially in Pakistan, we are operating on a growth mode right now. ठीक है, हम growth पे ज़्यादा focus कर रहे हैं. So right now we've been bleeding money so far.
So हम बहुत ज़्यादा revenue making की तरफ incentivize नहीं थे, rather we were focusing more on KPIs which were directed towards user growth and acquisition. So there's that. बाकी इसके अलावा जहाँ तक आपने तो बात की अब्दुल कि रहमान, आई अंडरस्टैंड कि आप ग्रो करने चाह रहे थे, तो आप फ्री सर्विस दे रहे हैं? right now it was free, and I have a rationale for that as well, if you would allow me to explain. No, I understand that. So I just wanted to know. So this is free service right now. Right now, yes, Okay. So there because is, most of the features that so you pre-revenue basically. pre-revenue. Okay. So gross margin doesn't apply. Okay. So then tell me, what do you do with these once they graduate? So right now, as we were operating as a closed loop wallet, graduation would mean the end of the user journey that we have acquired after so much efforts. Okay? Right. But since we have now partnered with banks, what we now like to call PEMO is बच्चे का पहला बैंक अकाउंट. तो अपने फीचर्स के थ्रू इन एजुकेशन कैंपसेस के थ्रू हमने बच्चों को एक्वायर कर लिए. नाउ दिस इज देयर एक्चुअल बैंक अकाउंट विच दे कैन यूज इवन इफ दे ग्रेजुएट या कैंपस से बाहर भी जाते हैं तो कहीं भी कभी भी कितनी भी देर तक इसे आप यूज कर सकते हैं. सो देयर इज नो एंड टू इट. इट्स जस्ट लाइक ए मोबाइल वॉलेट, जस्ट अ बैंक अकाउंट, बट द फर्स्ट वन. Right. तो कितना पैसा आपने रेज किया अभी तक, एंड व्हाट्स योर मंथली बर्न? So previously we have raised $100,000 as an angel, from an angel, out of which 40,000 has been committed so far. We recently have signed a grant agreement from ये Karandas, Pakistan, who is the managing body of the Gates Foundation here in Pakistan, to further fuel the developments that we have made so far. So उनके through हमें 49 million मिले. That is roughly 175,000 if we calculate on the basis of 280 rupees to the conversion of a dollar. Plus, we have also received $40,000 as a visa incentive from the visa incentive program, since we are also partnered with Visa directly. Right. I think माशाल्लाह आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, सब कुछ सही है. So I think there are two things that you need to provide to the potential investors. Number one ये है कि how you gonna monetize it now. आपने पैसे कैसे बनाने हैं? Because nothing free not gonna bring anybody any benefit down the road. Okay, that's number one. और number two ये है कि आपको ये बताना है कि once they graduate, how you gonna keep them, because retention of the customer is extremely important. You have put in a lot of effort to acquire them. You need to show them that they're gonna continue banking with you going forward. So these are the two areas that you need to make sure that your presentation covers them and very explicitly covers them. Thank you. बिल्कुल सही. अच्छा, Thank you. इसमें आपने दो चीजें कही हैं कि एक तो कहा फ्री सर्विसेज में, लेकिन आपके दो टाइप ऑफ कस्टमर्स हैं. एक है कंज्यूमर, दूसरा है वेंडर, जिसको आप मर्चेंट है बेसिकली. तो आप मर्चेंट को भी चार्ज नहीं कर रहे इस वक्त? So we are charging effectively, but you touch upon the point raised by Naeem Saib earlier as well. Is कि some things like free transactions are now order qualifiers in the payment industry in Pakistan. ठीक है? So आपकी जितनी भी revenue making ज़्यादातर आती है, that comes at a scale that you have a lot of that where you have achieved a lot of network economies. And I think उस वजह से हमने शुरू में अपनी services free दी हैं, but right now we're also नहीं earning नहीं, मेरा सवाल for the सिर्फ next वेरी period. स्पेसिफिक है अब्दुल रहमान, कि जी जो सर. आपका मर्चेंट है, जैसे लम्स में आप कैफेटेरिया में मुझे लेके गए थे, ठीक है, वहां पे ट्रांजेक्शन दिया था, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन का फी आपको कोई नहीं आता, मिलता आपको? No, we charge 0.5 to 1%, but those returns तो are slightly negligible no right no now. doesn't, but it is part of your business model. You should Definitely. mention that thing कि आपने ये कहा वो बिल्कुल फ्री नहीं है. ठीक है, वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को क्रिटिकल मास में लाने के लिए उसको रेवेन्यू को जो है वो सब्सटेंशियल होना चाहिए, क्रिटिकल मास चाहिए उसके लिए. दैट्स पार्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन बिजनेस, चाहे वो वीजा हो किसी जमाने में शुरू हो, चाहे मास्टर कार्ड शुरू हो, या कोई और भी पेमेंट कंपनी, पेमेंट कह रहा हूँ कि पेटीएम जैसा इंडिया में जो है. जी नंबर वन. नंबर टू जो है वो कंटिन्यूटी ज़ाहिर है वो कैफेटेरिया में तो नहीं आएंगे, जब वो आपके ग्रेजुएट हो जाएंगे, जो आपके कस्टमर स्टूडेंट्स जो हैं उनको ई कॉमर्स का ट्रांजेक्शन का भी दें, बिसाइड बैंकिंग का. बैंकिंग से आपको पैसे नहीं मिलेंगे ज्यादा, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन से आपको पैसे मिल सकते हैं, बिकॉज यू कैन ड्राइव their business to the e-commerce players as well, and then exactly. also you pay them. So all those things that needs to be looked at it, but do not ignore the revenue you're making. Doesn't matter चाहे वो एक पैसे मिल रहा है अभी.
वो I आपके usually रेवेन्यू have मॉडल that में है। one slide. I usually have that one slide वो इसमें वो missing है. It is the forecasted income streams that we have after the open loop integration that allows the interchange fee that allows us to उसमें सो हमारा जो लास्ट लास्ट account लास्ट पॉइंट में फिर रफीक साहब को पूछता हूँ कि भी जो नईम भाई ने बात सही की कि भी आप यू हैव टू शो टू द इन्वेस्टर हाउ यू गोना मेक मनी। तो Yep. अभी तो आप ये शो करें ना बॉक्सेस खाली, इसको डेमोन्स्ट्रेट करें इसमें रेवेन्यू क्या इज गोना लुक लाइक, व्हाट्स द यूनिट इकोनॉमिक्स इज गोना लुक लाइक। ये जो है ना दो तीन टाइप के इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी होगी अपनी प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो फिर दैट वुड शो कि भी हाँ भी इस साल जो है 1 ईयर लेटर और 2 ईयर लेटर दिस काइंड ऑफ रेवेन्यू दैट यू आर एक्सपेक्टिंग बेस्ड ऑन योर कस्टमर बेस। रफीक आपका क्या सवाल? जी, मेरे सवाल तो नहीं है, मेरे कमेंट्स हैं। आपने ऑलरेडी बड़ी अहम बातें कर दी हैं कि एक तो कन्वर्जन जो है ना, यू आर इन अ गुड मार्केट, दैट्स द गुड न्यूज़। कि ये वाले जो आपके कस्टमर्स हैं, दे आर गोइंग टू स्टे, इफ यू आर वर्किंग वेल, दे आर गोइंग टू स्टे विद यू फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। यूजुअली इस एज में जब लोग किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं तो दे स्टे विद दैट। बाकी आपने रेवेन्यू शो करने की बात ऑलरेडी कर दी है। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करें कि आपके कितने यूजर्स जो हैं जो जिनको रिमिटेंसेस आती हैं बाहर से, तो इफ़ यू कैन इंटीग्रेट दैट पार्ट तो उसमें मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, कन्वर्जन रेट में भी, अदरवाइज फीस वगैरह में भी। तो बाकी एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। Definitely, we're working on those lines. वन वन लास्ट क्वेश्चन, आपकी अडॉप्शन क्या है? ये तो लम्स में तो चलो ठीक है, वो तो घर की बात होगी आपके लिए, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज की ट्रैक्शन क्या है? So up until as we were operating as a closed loop wallet, हमने इसको expand करने की कोशिश की into UET, into HSN College in Lahore as well. But because it was a closed loop, उसमें we had to work on the B2B as well as the B2C side as well. And while we were acquiring the B2B clients, we saw that we were sort of reinventing the wheel altogether क्योंकि वो already कोई ना कोई दूसरा payment method adopt करते हैं. So we thought that as we go open loop, we'll just bank on the core banking infrastructure और हम सिर्फ work करें primarily as a B2C wallet only. So तो इसका मतलब with आपका जो the एक्सपेंशन प्लान है वो अदर यूनिवर्सिटीज का नहीं है, आपका एक्सपेंशन प्लान जो है वो बेसिक ओपन लूप करने का है, ये कह रहे हैं आप? open loop, but with a focus on educational sectors. Open loop तो जाहिर है, ठीक है. So ठीक है, everybody can use it anywhere, but तो फिर focusing हमारा on माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि भी टू फोकस ऑन एजुकेशन सेक्टर, वो किस तरीके से आप यूनिवर्सिटीज के साथ दूसरों के साथ काम करेंगे अगर वो ट्रैक्शन ही नहीं दे रहे आपको? no. So we have the campus ambassadors. So जो campus centric use cases हैं, those form the acquiring strategy. क्योंकि बच्चे ने 8 से 9 घंटे कैंपस में जो है वो गुजारना है, उसके बाद वाला जो टाइम है हम उसको भी फोकस करना चाह रहे हैं, उसको भी कैप्चर करना चाह रहे हैं. तो कैंपस के अंदर तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप अपने डेबिट कार्ड्स के थ्रू यूज़ जो है वो कर सकते हैं, आप अपने क्यूआर पेमेंट्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, आप कैंपस के बाहर भी इसको नहीं, यूज़ कर सकते मेरा सवाल है कि भी जैसा एचएसएन या यूटी लाहौर का स्टूडेंट जो है वो आपके पास अभी मौजूद है? नहीं मौजूद ना, वो हैं जी. आपने थोड़ा सा कैसे उसको अनेबल करना है? थ्रू दीज फीचर्स. सो लेट्स से इवेंट्स के थ्रू हमने उसको ऑन बोर्ड कर लिया, ठीक है, कोई हमने एचएसएन में इवेंट अच्छा, कराया फिर है. इसका मतलब आप ये कह रहे हैं उनको डायरेक्टली आप रीच आउट करेंगे, ये कहते हैं ना कि आप एग्जैक्टली उनके एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के जरिए नहीं जा रहे, उनको रीच आउट कर रहे हैं डायरेक्टली बेसिकली, दैट्स व्हाट यू बॉटम सेइंग। अप. ओके, बॉटम गॉट अप. इट। ओके, ठीक है, थैंक यू। जस्ट गिव अस अ मिनट एंड इन द मीनवाइल जो नेक्स्ट मोटो वेस्ट जो है कॉल के ऊपर? नहीं है तो फिर नेक्स्ट जो है सिक्योरिटी शील्ड कॉल के ऊपर है। Yes, तो can you hear प्लीज me? या प्लीज शेयर योर स्लाइड्स। थैंक्स Sure. अब्दुल रहमान, दैट वाज अ गुड प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर, थैंक यू. So we actually changed the name from Security Shield to Eagle Eye, and the ओके, reason is that security was very much focused on just around security. So we kind of moved from security into safety and wellness as well as we move forward. So what we're really doing is we're building a smart safety, security, and wellness solutions तो for the जस्ट field वेट workers. जस्ट वेट फॉर अ मिनट एंड देन विल Sure. स्टार्ट। Okay. Yeah, let me know when you're ready. या गो अहेड प्लीज। Okay.
So yeah, so we changed actually the name from Security Shield AI to Eagle Eye AI as a parent company because we wanted to focus more on the safety, security, and wellness across because we are focusing on the corporate employees. And our target market is actually United States to begin with, and then we can pretty much go across the world because that's where I'm based out of. That's what I know the market and everything. So the problems, what we are really solving, actually, is it moving? Okay, can you see my second slide? Oh, you guys are on mute, I guess. We can see it. Okay, so Yeah, we can yeah, see it. so there are challenges around, employees, security, safety, and wellness. Security as the first point because, when the field workers are out, in the field, they got exhaustion, dehydration, they have got falls, crash, a lot of things, and they need emergency responses. That's like really around the field workers, and now the new trend is basically, the mental health problems are arising as well. And within the offices, so there's a workplace harassment is a big thing, and mental health, and unsafe client meetings, and physical health. So all of these, we actually built a suite of solutions for that. Oh yeah, and the other thing is what corporates are losing is almost like 2 to 4%, their annual losses. And primarily, there are three things we're focusing on. So the problems are productivity, employee productivity, the legal costs that are attached to that, and also the attrition. Attrition is the third piece. Productivity is the biggest one because if employees are healthy, they're safer, secure, their well-being, then definitely they can be more productive. There are lots of lawsuits because of these security issues. So that's another one, we can manage that. And also if the corporates they provide better tools to their employees for better safety, security, and wellness, they can build a better relationship with the employees. So, that will actually increase the retention. So really, I mean, this is just a vision slide that we're, focusing on these three things, and all of our solutions, they're integrated with the monitoring. So we are focusing on three things, smart, digital, and AI. So in my past, and I'll actually take you to the next one slide. So in my past, I actually have been running with my CTO slash brother company, a software services company, and we have been doing a lot of IoT and AI work in the smart home security and smart video streaming and doorbells and all that. So we have been in this space, air quality and all that, like in the IoT space for the last 11 years. And we built and sold a smart home security company some years back called Abode. So we know this field in and out, and through that we met a lot of our partners and our advisors, and we realized that uh, if you add basically devices or build devices, it takes a long time to install, and then to scale basically. And so we figured that if we just utilize the existing smart devices, which are your smartphones and smartwatches, and there are lots of like, auras and rings and all these pendants and all these other things coming, so we can just integrate our technology into that. And then the second thing is, we can provide a lot of smart features on top of that. And now, with the advent of AI, there's a lot of AI-enabled features we can add. So my experience is all IT, and then getting into the business side. My CTO, he has been in the industry for कासिफ 25 साहब plus आप years. We both इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जरा एड्रेस करें, आपके पास 1 मिनट है और अच्छा ठीक है. So primarily, our solution basically revolves around, you know, uh, in the worker side, emergency notifications, weather alerts, panic alarms. We do, voice activated panic alarms, all of that. We are integrated into smart watches that is doing health monitoring. We have AI enabled algorithms. If there is something wrong, that connects basically to the 24 by 7 professional monitoring. Similar kind of a setup we have done it, in the my Sentry, my the employee solution as well. The additional thing is, if there's a panic, there's a live broadcasting that is basically delivered to the 24 by 7 professional monitoring so that they can provide the response.
It's a subscription-based business. It's a B2B basically. We're going after, the corporates. It's $180 per user per year for the field workers and $120 per user per year, for the office employees. Market size fairly big. They're like almost 100 5 minutes. million, both kind of employees. And market size is like $12.5 billion if you do the math, basically with the subscription we have enabled. अब स्पीड अप Sales करना होगा आपको distribution is कासिम. yeah. So just this is the last most important piece. So we actually partnered with the largest professional monitoring company. They got 2,500 dealers, and this is how we are basically going to be going out into the market. These are some projected revenues. Uh, the current companies are fairly legacy, and we are just building out this, the next generation of this technology business. We are raising $2.5 million. We put in $1 million basically from our own pocket. Our products are ready, and we are doing the integrations and the testings right now, and we should be in the market in January. Questions? Qasim Saab, excellent presentation. From an investor's point of view, it's very important to know what's your current ARR and what's your projections. So if you can share those, please. Sure. So we are going into the market in January. So we are pre-revenue, and we project, around 1.5 million basically this year. We have already the partners in place. So, as I said, like Rapid Response has almost 2,500 dealers that are selling the security solutions in the market. So that's our first, to go strategy. And then we have alarm.com lined up, and then we have JCI lined up, and then we have a couple of other basically big players. And I've built all these relationships, during the last 11 years, and they are basically on my kind of board of advisor, unofficial right now as well. We can't put them on the board of advisor because of the conflict of interest. The current board of advisor is the ex-CEO of Bring Security, who basically built Bring Security from 26 million to $267 million. Right. So how much is He's your burn and how much have you raised so far? So we just did internal. We put in around $1 million to build it out the solutions. Our burn is around 120 right now. As we might want to add a little bit more resources, 150, but we're trying to utilize, the AI enabled engineering and customer service 100, and 150, videos and is everything. that per Yes. month or per year, or what is it? Per month, 150, per month. Per No, no, month. per month, of course, $150,000 because per we're going to month. be building. Yeah, Wow. we're going to be building the teams over here. Of course, I mean, we're going after a big market, so, we need to raise accordingly as well. Right. So I know this is not part of this presentation, but I'm a partner with Mighty Capital, but we invest in Series A. So let's just I can provide you with my contact information. I know you are probably pre-seed right now, but if your Sure. projection is 1.5 million, then probably in 6 months we should be reaching at a critical mass where we can start evaluating if our Mighty Capital will be interested in investing or not. So Yeah, sure, Naeem bhai, that's fine. this is good, and that's what the role of Park Angels is, to facilitate their pre-seed funding, and then obviously when they grow into the seed level or Series A level, to help them there as well. So Yeah, absolutely sure. take that in We mind. already have like seed investors already lined up. So we are in talks with, early stage VCs and seeds. So we should be able to raise money based on my contacts and everything. And Yeah, even the partner is interested as well. Of course, they're selling the technology, so they are definitely interested. excellent. And we have the acquirers ready as well. So it's just basically we gotta take So it to, bottom line question, Kasim, that have you done any user level testing and feedback? Because at the end of the day, it is the users who are Yes. going to use that application. If they don't like it or Yes. they don't find valuable, then it's not good. If they find valuable, it's huge.
Please. Yes, so we are currently doing it. Like this month is all about basically current testing. And by the way, we have signed two partners in Pakistan as well. One of the largest security company, Piffers Security. So they're going to be selling our solutions and monitoring it. So, and then there is another company out of Lahore. So we built a platform in a way that we can take it to any country. We have a dealer portal at the back. They can add our solutions, they can create organizations can create users, they can white label it. So everything is all done basically. That's where we spend most of the money. Okay, good. You give us a couple of minutes, and the next one is sepia or solar splitting. Which one is available? sepia is available. Yes, sepia, please get ready in the meanwhile. I have one comment for Qasim Saab also. Since they are two brothers team only, it may help to bring in an outsider also, because the VCs do look at how well-rounded the team is and not just only the blood relationship. So keep that Sure. in So mind. we already, yeah, so that very good point. We already have identified executives. Uh, as soon as we raise a seed round, we'll bring them in as well जी as our क्योंकि core वो basically team वो फिर members, फैमिली like बिजनेस private से equity. फिर वो प्रोफेशनल बिजनेस की तरफ आ जाता है तो सही we है, बिल्कुल do ठीक है। look into that angle also. नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, वो मेरे पास हैं एग्जेक्टिव्स रेडी हैं। मैं बता वो द पॉइंट इज कि आई हैव वी हैव spent like almost 11 years in this industry, so I know the industry and all the executives in and out. So वो एक Honeywell का exec है, वो if he's interested, so जी तो we got the आपको वैसे relationships basically. चाहिए था कि you should be on the not on the delivery side but you should be on the evaluation side. Mashallah, you have a मैं वो mature enough business acclamation that you should be helping, uh, Hey, guiding he others. might be doing already on that part. जी नहीं Just one last मैं thing which I would entrepreneur say, Qasim, कि आपका नहीं burn नहीं मैं rate जो है, entrepreneur जी जी आपका burn rate बहुत high है, बहुत ज़्यादा high है. नहीं अभी तो 150,000 हमने have run multiple startups, and that's the would be programming for failure. आपका इतना burn rate high है, क्योंकि sometimes funding comes in, sometimes it doesn't come in time. तो उसके नहीं ऊपर नहीं वो जरूर आपकी बात देखिएगा. ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्टेड है बर्न रेट। अभी जो करंट बर्न रेट है उसको तो हमने काफी कम रखा हुआ है, 20-25 हज़ार डॉलर के करीब है वो। तो ये लेकिन बताया ना, जो मैं तो ये कह रहा हूँ, प्रोजेक्टेड, समझ, अच्छा मैंने पूछा था आजकल burn rate कितना है आपका? अच्छा आपने कहा नहीं आजकल जो है 150,000. वो 20-25 के करीब है, बट हाँ, सही है. प्रोजेक्टेड जो है व्हेन वी ऐड द टीम सो देन वी विल इंक्रीज इट ऑफ कोर्स। Now we और know. Yeah. अनवर इनको दिखाना पड़ेगा कि ये इंक्रीज करेंगे बर्न रेट अगर इन्वेस्टर्स तब भी आते हैं जब व्हेन यू थ्रो द मनी सो आई थिंक प्रोजेक्टेड इज फाइन एंड यू आर राइट कि करंटली इज 2025 व्हिच इज ग्रेट. Yes, exactly. And also, I think that development and all of those things should be done at a cheaper place than here. So that's Kasi, you might be already doing that thing. Okay, so जी let's जी go वो to ऑलरेडी Sepia. हर चीज डन हो चुकी हुई है। हम ठीक है. वी आर रेडी टू बेसिकली रॉक एंड रोल इन द मार्केट। या इंशाल्लाह ऑल द Inshallah. बेस्ट. Good luck, man. थैंक यू। Absolutely. अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? Walaikum salam, Sepia. Please, जी। continue. Assalamu alaikum everyone. This is Shoaib Rais and we are Team Sepia. Today we are excited to share our vision with you and invite you to be the part of our journey. Moment once gone is gone. However, with photography, you can preserve it for generations. In March 1993, Kevin Carter took this picture of a starving Sudani child. One picture changed the perspective of the world about human tragedy. The story inside the picture spoke 1,000 times than words. This, this picture gained the space among most influential photograph of humankind. This is the power of a picture. This is the impact a photographer can create. There are thousands of photographers ready to make an impact. The photography business is not small. The numbers related to the photography business are interesting. There are more than 50,000 people associated with photography in just three cities, Lahore, Islamabad, and Karachi. The business figure in wedding season are also substantial enough to recognize the business. However, there are many loopholes in the sector, and unfortunately, the photography business is underrated. Unregistered photographers, big studios monopoly, no digital booking platform,
and limited recognition for small scale photographers. These are the key challenges CPIA is here to solve. This is where CPIA steps in to address these challenges. CPIA offers a comprehensive solution. We are digitalizing photographers on a single platform, creating profiles for small photographers to showcase their art, establishing direct linkage between photographers and clients, enabling hobbyists to turn their passion into a business. Next. CPIA is a one-stop solution. We are not just about digitalizing photographers. We are about creating connections. You can find photographer based on your budget, availability, region, and expertise. It's easy. Book your preferred photographer, bid on rate profiles, and save time. So the opportunity is huge. The photography industry in Pakistan is estimated to be around 164 million in 2023, with the wedding photography sector alone valued at 100 million. The majority of photographers are freelancers and self-employed, presenting a vast and untapped market. CPIA's business model is built for success. We are tapping into a market of 2.5 million weddings in Pakistan in 2024 and 2025. Our customer acquisition cost is just 1500 PKR, with influencers driving organic growth. Customers return for multiple bookings, boosting lifetime value, while we support local photographers and small businesses, helping them to thrive in a competitive industry. Our revenue model is includes 5% booking commission, feature charges, and CPS studios and franchises, plus discount from camera manufacturing brands. So CPIA revenue is growing rapidly, with a 78% jump from June to August and a further 45% increase by October. This growth comes from three active revenue streams: CPIA studios, booking from commission, and a CPIA e-store. So CPIA is already connected to 8,000 professionals ready to come on board. Through strategic partnership with collaboration like Sony Alpha, Talha Qori Photography School, and Pakistan Photography Association, we have established a strong network. Okay. We connect with photographers through social media outreach, photographers community, and referral programs. Our customers, we use target ads, email marketing, SEO, and content strategies. Additionally, we host workshops, expos, and awards to foster a strong photography community. CPIA stands out with its focus on photography, offering a distraction-free platform, ensuring professionalism with detailed profiles, verified reviews, and seamless booking process, featuring secure payments and image licensing, making CPIA go-to solution for both photographers and clients. So this is our team, myself, Shoaib Reis, and I have experience of 4 years in the industry of photography. Mubin Ahmed, our CTO, leads technological growth, while Muhammad Umar, our CEO, drives customer acquisition and partnership. With guidance from our mentors, our team is transforming the photography industry. Next. We are seeking a 1 million investment to drive our growth, and this funding will help us to scale and achieve our next milestones. So this is all from our side. If you have any Great. question, you can ask. नहीं भाई जी so how much is your potential आपने कोई projection नहीं दी revenue की I know you did 17,000 I saw in one month Yes. but what's your projection सर हमारे पास जो कस्टमर्स आते हैं, लाइक अभी हम लोकली लाहौर, कराची और इस्लामाबाद की बुकिंग्स जो हमारे पास शूट्स की आती हैं, उनको हम कैटर कर रहे हैं. तो अभी हम नहीं, वो जो तो आपका अक्टूबर में तो आपका 19,000 रेवेन्यू आ गया ना वो मैंने देख लिया है लेकिन मेरे कहने का मकसद है 2025 में आपका कितना रेवेन्यू होगा क्योंकि अगर आप $1 million किसी से ले रहे हैं तो ही और शी वांट्स टू नो कि भाई आपका बिजनेस कितना ग्रो होगा आप क्या करेंगे उस पैसे से सो यू नीड जी टू सर. टेल देम दैट राइट यस सर, वो चीज़ सर हम इंक्लूड कर देंगे. सर हमारा जो कस्टमर है, लाइक उसमें जो हमारी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है
वो अराउंड 1500 से 2000 की होती है। वो मैं बट समझ ये गया हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे सोएब। मेरे जी जी कहने का सर, वो मतलब मैं है। समझ गया हूँ आपका, वो हम ऐड करेंगे आगे इंशाल्लाह अपने जी, प्रेजेंटेशन। हाँ और वो इंशाल्लाह। नहीं, आपने इसको इस डेक में जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट है रेवेन्यू फोरकास्ट की फ्रॉम पाक एंजल से है, तो वो आपको ऐड करनी है चार्ट। 25 का रेवेन्यू, 26 का रेवेन्यू, 27 का रेवेन्यू, जो भी जी अप्रोक्सीमेट आप सोचते हो। और क्योंकि जी जी सर। अगर खासतौर पे आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हो एनीथिंग अबाउट $50,000, people they want to try to know exactly what your growth is and how is that growth is going to come from। और फिर और उसमें दूसरा आप आप, assumptions भी शेयर करेंगे भी, वो जो आप रेवेन्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी क्या assumptions हैं। या ठीक है, और जी सर। आपको ये भी बताना है कि उस पैसे का आप करेंगे क्या। आप बिल्कुल। पैसे सर लेके, हाउ जी यू जी गोना यूज, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू हैव दैट मनी टू डू व्हाट। हम वो तो वो मेरा सर ख्याल आपने कुछ बताया कि कहाँ पे। बिल्कुल रफीक, आप बताइए, हाँ क्या सवाल आपका। हाँ जी, मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि इसमें आपका रेवेन्यू तो पता चल गया, तो इसमें आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितनी क्या, आपका मार्जिन कितना है इसमें, तो सर आउट ऑफ। इसमें अगर सर हमारे जो डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स है उनमें हमारा जो मार्जिन है वो डिफरेंट है। लाइक अगर हमारा कोई सीपीएस स्टूडियोज का इवेंट अगर हमें बुकिंग होती है तो उसमें हमारा जो मार्जिन है वो 60% से ज़्यादा बढ़ जाता है। लेट सपोज अगर 1 लाख की हमारे पास बुकिंग है तो उसमें हम 60,000 पे हम उसके अंदर हमारा प्रॉफिट रहेगा, और 40,000 पे उसमें हमारा कॉस्ट आएगा। अगर हम वो कोई इवेंट आगे कराची में या लाहौर में किसी को रेफर करते हैं तो उसमें 20 to 25% अभी इनिशियली हम चार्ज कर रहे हैं। और उसके बाद ये कि जब हम इसको पूरे पाकिस्तान में इसको जब हम करेंगे तो फिर हम थोड़ा कम करके इसको 5 to 10%। ओके, सो दैट्स देन समथिंग दैट यू नीड टू क्लैरिफाई, क्योंकि ये 19,000 आपका रेवेन्यू नहीं है, ये आपकी बुकिंग है। जी, ओके। ये यस यही मैं सर। क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ, रेवेन्यू तो ऐसे आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको ये दिखाना है कि बुकिंग्स में आपकी कमीशन कितनी है और उस कमीशन में आपकी कॉस्ट कितनी है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू शो द नंबर्स, अदरवाइज दीज आर मिसलीडिंग सर ये नंबर। इसके नीचे हमने अपनी कॉस्ट लिखी हुई है रेवेन्यू के नीचे। ना कॉस्ट तो लिखी हुई है, तो आपका तो सिर्फ सिक्स है, कितना है ये, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा नीचे ये, इसको सिक्स हंड्रेड सर एटी कितना। थाउजेंड 600, छः हजार 6,800। आठ सौ तो आपने यस। ये कॉस्ट नहीं, आप अपना पहले इसको रेवेन्यू को आप बुकिंग कर दें, फिर जी सर। अपना रेवेन्यू दिखाएं, फिर उसके नीचे अपनी कॉस्ट दिखाएं, श्योर सर, ठीक है। क्योंकि तो ये थोड़ा सा आसान कर दूं। या आपने कहा था ना कि वो 150,000 का आपको बिजनेस बना जिस शहर में आप मौजूद हो, लेट्स से कि 1.5 लाख का बिजनेस बना, उसमें आपने कहा कि भी 60,000 कॉस्ट है और 90,000 आपकी प्रॉफिट है, कुछ इस तरह की जी सर। बात की। ठीक है जी ना। जी तो वो तो आपका 150,000 रेवेन्यू, क्योंकि आप डायरेक्ट बिजनेस कर रहे हो, तो ठीक है कि वो आपका रेवेन्यू 150,000, ठीक है। और वो जी सर। आपकी कॉस्ट बताया कि 60,000 90,000 आपका प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और शहर में कर रहे हो, या फिर आपको जिस तरह आप कराची में कर रहे हो, दूसरे शहर में कर रहे हो, और आप जी सर। सिर्फ 20% उसका कमीशन ले रहे हो, तो आपका 20% जो कमीशन होगा वो आपका रेवेन्यू होगा। ठीक है। ठीक जो है सर। वो 150,000 का उसका 1,50,000 का बिजनेस होगा, उसका सिर्फ 20% जो है 30,000 आपका रेवेन्यू कहलाएगा। और वो जो थर्टी सर थाउजेंड आपने हमारे रेवेन्यू डिलीवर पास किया उसकी, अरे बात तो सुनो आप बहुत जी जल्दी जी जंप करने की कोशिश करें, करो जी लिसन सॉरी करने सर की भी। ठीक है। जी जी तो उसके बाद जो 30,000 आपका जो रेवेन्यू होगा, उसमें आपने देखना है कि आपकी कॉस्ट क्या थी, जिसको आपने, जिसकी वजह से सेल्स कॉस्ट भी हो सकती है, सपोर्ट कॉस्ट भी हो सकती है, साइन अप कॉस्ट भी जो भी है, कि भी आपका फिर उसमें क्या कॉस्ट है और क्या मार्जिन होगा। ये दो चीजें आपको ख्याल रखना होगा, ठीक है। अच्छा, मेरा ठीक है एक सर। और क्वेश्चन है, वो ये है कि आपके पास इस चीज़ का आप क्या ख्याल रख रहे हैं, या कोई ऐसी ऑप्शन आपके पास क्या है कि वंस यू रेफर ए फोटोग्राफर टू समबडी, तो वो उनसे डायरेक्ट रिलेशंस लोगों के यूजुअली एस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो देन नेक्स्ट टाइम दे डोंट गो थ्रू योर प्लेटफॉर्म, दे गो डायरेक्टली टू दोज पीपल, या उनकी जो रेफरल्स होती हैं वो भी डायरेक्ट उन लोगों को होती हैं, तो इसका आपके पास क्या इलाज है। सर इसका इलाज हमारे पास लाइक हमारे पहले बिजनेस मॉडल में सीपीएस स्टूडियोज हमने इंक्लूड नहीं किया था। तो ये है कि हम कस्टमर को हमारे पास अभी 3 टीम्स हैं। एक लाहौर में है, इस्लामाबाद और कराची में।
अब ये हमारी 3 डेडिकेटेड टीम्स हैं जो खुद रेफर नहीं करती, अपने पास क्लाइंट को डायरेक्ट नहीं करती। अगर इसके पास हमारे पास ज़्यादा इवेंट्स आ जाते हैं, लेट सपोज हमारे पास लाहौर में 5 इवेंट्स एक ही दिन में आ जाते हैं, तो वो फिर हम उसमें से एक एक जो हमारा जो टीम लीड होता है उसको हम साथ भेजते हैं उसके, कि क्लाइंट का जो क्या कहते हैं हमारा अच्छा राब्ता है वो सिर्फ ये तो ठीक है, हमारे मुझे फिर समझ आ स्केलेबल, गया ये बिजनेस आपका स्केलेबल क्या। नहीं हुआ ना फिर तो। या कि अगर आपको हर इवेंट में आपको तो ये जाने के भी आपके इवेंट 20,000 इवेंट हो रहे हो एक मंथ में, और 20,000 के लिए आपको अभी 20,000 लोग ढूंढने पड़ेंगे, तो स्केलेबल नहीं हुआ। आपने जो रफीक का सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अट्रैक्शन, और एक तो बात है, दूसरे उसको मेंटेन करना, उस कस्ट जो आपका जो पार्टनर होगा वो आपके साथ लॉयल रहे, उसमें आपने सर। देखना है उसकी, उसके लिए आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, उसके सर कस्टमर के इसमें लिए क्या बिल्कुल। वैल्यू ऐड कर रहे हो। एक मैं इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि हमारे प्लेटफॉर्म से उसको आगे भी काम मिलेगा, तो वो हमारे साथ लॉयल रहेगा। एक कस्टमर तो अब हाँ तो उसने करवा ली अब शादी, अब उसके आपने बाद तो वो सवाल का दोबारा जवाब नहीं दिया है। करवाएगी शादी, अगर करवाएगा अब भी तो ठीक है, टाइम उसको चाहिए इस चीज के लिए। ठीक है, अब बहुत ज्यादा चीजें कवर नहीं कर सकते कॉल पे, तो ठीक है, ये जी अब आपने थोड़ा सा सही जवाब दिया है। लास्ट सवाल ये मैं पूछूंगा, ये 1 मिलियन क्यों आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हो, आप पाकिस्तान में हो, आपकी कॉस्ट जी जो सर। है वो इतनी है, तो इज ऑलवेज बेटर टू बिल्ड मोर वैल्यू, टेक अ स्मॉलर इन्वेस्टमेंट, बिल्ड हायर वैल्यू, देन टेक अनदर इन्वेस्टमेंट। अब इतना बड़ा जो है ना, आप इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट ना मिले तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा, और दूसरे आपकी सर हमारे वैल्यूएशन के भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको वैल्यूएशन अभी तो बहुत ज्यादा नहीं होगी आपकी कंपनी हाँ की। जी। जी तो सर। 1 मिलियन जो है वो तो आप ना बहुत बड़ा हिस्सा इक्विटी का दे दोगे फिर 1 मिलियन के चक्कर में। ठीक सर है, ये वो भी आप देखिए इस बात। सर देख लेंगे, ये हमारे मेंटोर हैं मिस्टर आबिद मलिक, उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि यू शुड गो तो फॉर फिर वन उसके मिलियन लिए फिर एक और आइडिया मैं आपको दूं कि जैसा हमारे पाकिस्तान यहाँ पे यूएस में जो है, देखिए अब तक जो चलता है वो वर्ड ऑफ माउथ से होता है। कभी ये ना, अरे ये मैंने देखा था तुम्हारे वो शादी के ऊपर वो कोई कैमरामैन आया हुआ था, कैसा था, अच्छा था, अच्छा यार, मुझे बता देना, फोन नंबर दे देना मुझे, मैं जी सर। अपने लिए भी इस्तेमाल करूँ, इस तरीके से चलता है इस वक्त। उसमें जी बात सर। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको वही पता नहीं आपके पास अच्छा बंदा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो बड़ी यस सर। अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तानी कम्युनिटीज के, और बल्कि इंडियन कम्युनिटीज की शादियां जो है यूएस में, नॉर्थ अमेरिका में होती हैं, उसको भी ये मार्केट प्लेस जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है। अगर आप नॉर्थ अमेरिका की मार्केट में जाओगे और डेवलप कंट्रीज के मार्केट में जाओगे, तो वो जी फिर सर। आपको वैल्यूएशन इतनी मिल सकती है कि $1 मिलियन को इन्वेस्ट करेगा अच्छी अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर। तो उसके ऊपर सोचिए, फिर बात करिए आबिद मलिक साहब से। अगर पाकिस्तान की मार्केट को देखते हुए तो जरा मुश्किल है, मैं समझता हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल चलते हैं, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है जी सोलर स्प्लिटिंग सोर्स फैक्ट्री, दोनों में से कौन सा मौजूद है अभी। Yes, sir. I am available. Solar splitting agrivoltaics. ओके परफेक्ट है, सही है, ठीक है, आप 1 मिनट होल्ड कीजिए, इसको कंप्लीट कर लें। Sir, can you see my screen? यस वी कैन सी योर स्क्रीन, Okay. थैंक यू। अच्छा, बिफोर यू स्टार्ट, ये कॉमन जो इशू हमारे पास आ रहा है 5 मिनट वाला, तो आप जरूरी नहीं है कि आप सारी सारी स्लाइड्स को कवर करें, जस्ट फोकस ऑन इम्पोर्टेंट थिंग्स। हाँ खासतौर पर यार Yes, पूरी sir. पूरी कहानी ना सुनाई, पर्सनलाइट जो है अभी जिस तरह पहले हुआ था एक दो, तो आप फोकस रखें, Yes. मेन मैसेज अक्रॉस करें, 2 to 3 से पॉइंट से ज्यादा नहीं मैसेज पर स्लाइड पे आप कोशिश करें उसको 2-3 पॉइंट्स के अंदर अंदर रखें, ठीक है। Right, sir. प्लीज कंटिन्यू, प्लीज स्टार्ट। Okay. Thank you. Uh, Agricultural land is being reduced to make the way for renewable energy sites like solar parks. These parks, while essential for clean energy, leaves vast areas of land underutilized. Globally, land scarcity is an issue, and utilizing such spaces effectively is crucial. Studies shows that by 2050, ये food production देखें फिर must आप increase by वही 70%. भाई 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 मेरे, आप वही कर रहे हो जो हमने अभी बना किया था। ये पूरी स्लाइड के ऊपर तो हम Yes, भी sir. रीड कर सकते हैं, आपको रीड नहीं करना स्लाइड, इसमें No, दो sir. तीन मोटी मोटी I'm चीजें not reading. कहानी के तौर पे बता दें क्या ये प्रॉब्लम है कितने की तरह। ओके,
Don't Yes. read the slides, please. Do not No, sir, read I the am not slides. reading. Okay. तो बताइए, So शॉर्ट में the बताइए. started, the problem is the agricultural land is being reduced to make a way for renewable energy sites like solar parks. These parks, while essential for clean energy, leave the vast area of land underutilized. Our solutions target this critical gap by enabling the agricultural productivity beneath the solar panels, aligning with the United Nations Sustainable Development Goals for both secure food security and sustainable energy. And what is our solution? Our innovative solution is a specialized solar splitting film, which allows solar farms not only to generate energy, but also letting essential light spectrum to pass through for crop growth beneath the panels. This film selectively filters the solar spectrum, allowing only essential wavelengths, primarily blue and red lights, to reach the plants. Blue light stimulates the vegetation growth, while the red light is crucial for flowering and fruiting phases. This spectral technology supports efficient land use, enabling the energy and crop production in the same area, ultimately enhancing the ROI and contributing to the sustainable farming. Our target customer includes solar farm developers, indoor farm operators, and agriculture stakeholders. Solar farms developers aim to enhance the economic value of their projects, and our solutions offer a unique opportunity to integrate energy generation with agriculture productivity, creating a dual purpose asset. The global uh, solar park markets, our target customer include solar farm developers, indoor farm operators, and agriculture stakeholders. The global solar park markets valued about $91.5 billion in 2023 and is growing at an impressive CAGR of 13.03%, reflecting a rising adoption of renewable energy solutions. Additionally, the indoor farming market, currently worth of $50 billion, is projected to more than double by 2030, with a CAGR of approximately 9 to 10%. These figures highlight the vast growth potential and scalability of our solution across diverse industries. The indoor farming market is highly competitive, demonstrating by established players offering LED-lit farming system and traditional indoor farming solution. However, the rural agriculture and solar park segments remain largely untapped and non-competitive. Our dual functional technology stands apart, offering a unique combination of solar energy capture, optimized plant lighting. To acquire customer, we are exploiting partnership with key players in the energy and agriculture industries. We have been actively showcasing and marketing our product at various exhibitions and technology competitions for the past years. Through these events, we have gained significant interest from potential customers. And our product is fully developed and has also undergone initial successful trials. R&D is underway in collaboration with various universities across Pakistan for further product improvement. Few funds have also been raised till now for our R&D and pilot project installations, along with the attachment of an agriculture advisor. We are in talk with the two potential clients in urban and rooftop farming sector, whose project value is approximately 150,000 US dollar. We project initial revenue traction through pilot installation at solar farms, expanding rapidly as we scale production. Over the next 3 years, our revenue growth is driven by full-scale solar farm contracts, urban agriculture partnerships, and indoor farming application, targeting exponential expansion in these high-growth markets. Our revenue model is centered on direct sales of our product, urban farming setup, and indoor farming agriculture facilities. For solar farms, we offer large-scale installations with a focus on improving land productivity. For urban and indoor farming, we provide tailored solution at competitive pricing. As we have a ready product at hand with basic printing facility, therefore, at this juncture, we will focus on marketing and pilot demo project installation at various locations across Pakistan. This phase approach allows us to proceed with minimal financial risk, concentrating resources on validating our product in real-world conditions and building customer interest. We plan to operate within a lean budget initially of approximately $50,000, scaling investment in line with demand. This investment will allow us to scale our technology for large pilot programs and to refine our product further. This is our team.
Our team combines expertise in the solar technology, agriculture, and engineering. I, with a background in materials engineering and PhD from Germany in thin film technology, along with extensive R&D experience, lead the technical side, while our co-founder with a financial background handles the strategy and operations. And we have also on board an agriculture advisor from academia with a PhD from Japan and a proven track record in enhancing the food nutrition value in crops by seed genetics along with the aquaponics and hydroponics. And together we are well equipped to bring this solution 5 minutes. to the market. In summary, our fully developed and validated product utilizes spectral splitting to optimize solar parks and other underutilized land for dual-use application. With a clear focus on high-growth market, unique technology, difficult to replicate, and alignment with the sustainability incentives, we aim to pioneer this space. By targeting initial pilot projects and scaling strategically, we position ourselves as leaders in solar-assisted agriculture, addressing the growing demand for innovative space, efficient farming solution in urban and rural areas. Thank you. ओके, इससे पहले मैं क्वेश्चन का पूछूं जजेस से। ये जो स्टाइल है ना प्रेजेंटेशन का, बहुत बहुत चैलेंजिंग है भाई। यू वर रीडिंग फ्रॉम समवेयर, इट वाज कमिंग आउट लाइक यू रीडिंग न्यूज़, एंड इट्स वेरी हार्ड टू फॉलो एग्जैक्टली व्हाट यू सेइंग। तो आप इसको जो है ना वो प्रैक्टिस करें कि कैसे आप विदाउट रीडिंग डिलीवर कर सको अपने मैसेज को। ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? यू कैन नॉट रीड द प्रेजेंटेशन। आप बात So समझ आ I'm गई just आपको? highlighting the yes, No, okay, but I'm you just were highlighting the you were important reading points. from text somewhere, right? That was very very clear. It does not come out effective. That's all I'm saying. अगर आप रीड नहीं करें तो फिर स्लो डाउन। आपने शायद वो प्रेजेंटेशन हमारी अटेंड नहीं की जिसमें हमने बात की थी। आप यूट्यूब पे भी वो देख सकते हो कैसे प्रेजेंट करना है, मेन पॉइंट्स के ऊपर देखकर करना है, एंगेज करना है आपको अपनी ऑडियंस को, कि ताकि आपके साथ रहे वो। ये नहीं कि आप बस चलते चले जाएं, ठीक है? दैट्स माय इनपुट। यू हैव टू करेक्ट योरसेल्फ ऑन दिस थिंग। विद दैट सी प्लीज सम क्वेश्चंस यू हैव। Okay, मेरा मेरा क्वेश्चन ये है, आई वांट टू अंडरस्टैंड, बाय द वे, after Anwar's comment, I think your presentation covered all the areas though, so the presentation itself is good. I think the delivery needs improvement. So basically what I heard, understood from you is कि ये जो regular solar panels हैं उनमें से light penetrate नहीं करती, so you are bringing some kind of a film with which the light will penetrate and it can enable the plants to grow better. Is that what I understood it correctly or Yes, wrong? yes, you're right. Okay. तो आपने ये टेक्नोलॉजी जो डेवलप की है, आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में ऐसी नहीं होगी, बट दुनिया में आपने देखा है वर्ल्ड वाइड, इट डज समबडी एल्स हैज द सेम टेक्नोलॉजी, एंड आर यू गाइस, or is it totally breakthrough from Pakistan, which is not available worldwide? Yeah, so one of the professor in University of California, Davis, have invented one of these inks who has this filtration technology, but no one else has developed this ink. So we have also developed this ink that can filter the light to pass through. Got And it. as far as your question is concerned, regarding the solar panels, as the regular solar panel is concerned, it is fully covered with the silicon segments. As you can see with this slide, when we are going to embed our film with the solar panel, we just remove a few segments from the panel, and then we embed the film with this. And this is the real picture. At A, you can see we have removed some silicon wafers from there, and so that the light can pass through it. And moreover, we can also install as side windows using this, so that from everywhere, wherever the light is coming within the field, it is filtered out, and without having the artificial lighting, we can have the natural light, so that plant can grow under the natural conditions without utilizing the fossil fuel energy. Okay, So so this is the real couple of picture. You can see questions. one of the There's
तो जरा टाइम दीजिएगा, जरा आंसर बेशक छोटा कर लीजिएगा। हाँ जी, आंसर छोटा कर। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि इससे व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द सोलर पैनल, उसमें कितनी रिडक्शन आती है? Sir, if we are going to remove the half of the segments, then definitely it is reduced to 50%. तो फिर तो ये तो 50% reduction प्रॉब्लम आ is गई ना उसके लिए। जो जिस बंदे ने सोलर पैनल लगाए हैं उसका मकसद तो ये है ना कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करे। तो yes, अगर आपने लाइट, एक तो लाइट का खर्चा है, इधर आपने आधा कर दिया है उसका सोलर पैनल की आउटपुट। तो यू गोना हैव हार्ड टाइम कन्विंसिंग द एंड कस्टमर कि एलईडी नहीं यूज करो, ये यूज करो, बिकॉज एलईडी में बी चीपर। So you need to do cost benefit analysis कि by providing this product, what do you take out and what do you bring to the table? Otherwise, it yes, may sir. be less beneficial for somebody to use your product. Yes. The yes, you're right. If you talk about the small customer like of the houses of the 5 marla, 10 marla, then definitely this is the point of question. But our focus is the solar farms. That मैं is छोटों को तो इतना नहीं फर्क पड़ेगा, बड़ों को फर्क पड़ेगा आपका। So नहीं, it's आई the थिंक opposite. yes, sir. Sir, there are नहीं two भाई, things. Let इनका let me explain. इनका इनका जो Sir, एंगल है वो डिफरेंट है। वो ये कह रहे हैं कि अभी बड़े फॉर्म्स हैं और वो अभी इस वक्त सोलर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, उनके पास अपॉर्चुनिटी है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने की अगर इनकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। नहीं, अनवर ये देखे ना, अगर बड़ा फॉर्म है तो वो रेगुलर सोलर पैनल यूज कर सकते हैं, और नहीं उसके तो अंदर रेगुलर लाइटिंग के। सोलर पैनल यूज करेंगे तो उसमें से लाइट नहीं गुजरेगी तो फॉर्म कैसे चलाएंगे? हाँ, लेकिन वो एलईडी यूज करेंगे ना, तो वो sir, एलईडी sir, यूज एक मिनट सर, करेंगे। थोड़ी सी हाँ, आप जवाब सर दीजिए। एक हाँ मिनट, थोड़ी सी कंफ्यूजन हाँ। हो रही है सर। सर हम्म, लेट मी क्लियर। द या प्लीज। फोकस इज कि देखें, अगर इफ यू हैव द सोलर फार्म्स, आप लैंड अंडर द सोलर फार्म इज टोटली बैरन। The one thing is by utilizing this technology, you can utilize the land under the solar panels, under the एग्जैक्टली। solar parks, right? And under the solar park, the park acts like a indoor farming industry, and there is a fast growth of the farms. So it is a very attraction for the governments and for the big investors who are going to make the solar parks everywhere across the globe. अच्छा अच्छा, Number आतिफ two, आतिफ साहब, बात who आपकी समझ are आ गई है। बात आपकी समझ आ गई। मैं एक सेम जी क्वेश्चन जो है ना, एक डिफरेंट तरीके से आपसे पूछता हूँ। अगर जी एक जी एकड़ के ऊपर आपका ये लगा हुआ सोल्यूशन, तो इसका रेवेन्यू क्या होएगा कंपेयर टू सेम सोल्यूशन विच इज ट्रेडिशनल? अगर फॉर्म है, सिर्फ yes सोलर sir, फॉर्म लगाया हुआ है। सिर्फ फॉर्म में, फॉरगेट अबाउट द क्रॉप। yes, so the cost is same नहीं, because के कॉस्ट सेम, हमने जो मैं इसकी रेवेन्यू की जो बात कर। yes एक sir, एक the एक एकड़ revenue के will ऊपर, be yes मेरा सवाल yes समझे जरा। exactly sir, बिल्कुल I got your answer. Sorry, I got your question. The thing is कि एक एकड़ के ऊपर जब whatever the person has installed one solar farm and that is generating for example 1 megawatt, by installing this our technology over the same land, he will definitely producing half of the megawatt. जी, वो Then समझ आ गई। what is the definitely ROI will go down. But if at the same time if he growing the crop below the land, then definitely the earning from the crop will balance the ROI. या लेकिन नहीं आप नहीं, देखें वो दोबारा आई एम जंपिंग इन। द ट्रेडिशनल सोल्यूशन विल बी कि रेगुलर वो सोलर पैनल यूज करेंगे, उससे लाइट नहीं जाएगी, उस लाइट नहीं जाने के लिए वो एलईडी लगा देते हैं, ठीक है। तो दे हैव ए सोल्यूशन। आपने कहा कि आप अपना वो उनकी 50% कम कर देंगे, तो आपका जो 50% कम होगा वो एलईडी इलेक्ट्रिसिटी जो लगा रहे हैं लाइट देने के लिए, विच वन इज चीपर, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू या कम टू। प्लस एक और Yes sir. एंगल भी है नईम सर साहब, एक इसका मिनट क्योंकि देखिए, अभी इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले सकते, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सर है। मैं अ, जी आतिफ, अगर आप इसको सवाल को ले, यू हैव टू कम बैक। जी जो बॉटम लाइन क्वेश्चन यही है कि भी आपका सोल्यूशन इस्तेमाल करते हुए 1 एकड़ पे एक कस्टमर का क्या रेवेन्यू हो सकता है,
दूसरा सोल्यूशन इस्तेमाल करते हुए जो एलईडी की बात कर रहे हैं नहीं भाई, उसका क्या हो सकता है? Yeah. और वो ठीक है इसको राइट। इस चीज से देख लें, क्योंकि जो है ना, हम काश्तकार लोग हैं, मेरा बैकग्राउंड हम अभी भी यही काम करते हैं, तो यू हैव टू कंपेयर इट विद द लीजिंग कॉस्ट ऑफ 1 एकड़। अगर आपको 1 लाख रुपए में लीज मिल जाती है 1 एकड़ की साल के लिए, और आपका जो रेवेन्यू आपका सोल्यूशन करने से 5 लाख कम हो जाता है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस टू यूज दिस सोल्यूशन। आई वुड जस्ट गो विद द रेगुलर एंड वुड नॉट ग्रो एनी क्रॉप। Yes, exactly. तो So इन can चीजों के one ऊपर आप line जरा गौर answer, कर लें, sir? बाकी बाद में Sir, डिस्कशन। एक मिनट, one line answer. Let me answer one line. कि अब ये जो 3 डिफरेंट स्ट्रीम से आ रहे हैं, वन स्ट्रीम एक रूफटॉप गार्डनिंग की बात है, एक इंडोर फार्मिंग का क्वेश्चन है, और एक ओपन फील्ड फार्मिंग का क्वेश्चन है। ये 3 सारे एक डिफरेंट ही क्वेश्चन स्ट्रीम है, के क्वेश्चन है सारे एक ही क्वेश्चन है, जी। आप जो समझ रहे हैं। जी, मैं आपको बताता हूँ, जो ओपन फील्ड फार्मिंग के जो का जो सोल्यूशन है, इसमें यह है, ओपन फील्ड में अगर आप नेचुरल लाइट पे क्रॉप लेते हैं तो आप एक साल में 2 क्रॉप या 3 क्रॉप्स लेते हैं। अगर आप हमारे सोल्यूशन से क्रॉप लेंगे तो क्रॉप की जो ग्रोथ है चूंकि फास्ट है, आप एक साल में 4 क्रॉप्स लेंगे। ठीक है, दिस आप इज ये द करें देन आतिफ, डेफिनेटली। आतिफ यू नो बेटर देन ऑल ऑफ अस राइट। आप ये करो कि ये तीनों की ऑप्शंस को लेके एक या दो चार्ट बनाओ, हाँ जी, बिल्कुल। और उसके ऊपर ये सवाल जो पूछा गया है ना जजेस से, वो उसको एड्रेस करो। जी ये हर इन्वेस्टर आपसे राइट। पूछेगा, बल्कि इन्वेस्टर को छोड़े, आपका बिजनेस मॉडल इसके ऊपर डिपेंड करता है भाई। अगर आपने होमवर्क नहीं किया इसका, तो आप टाइम खर्च करके, पैसे खर्च करके 2 साल में पता चले यार ये तो बात ही नहीं बन रही, क्या फायदा? तो बॉटम नहीं सर, लाइन हमने उन्हीं ऑलरेडी 3 सिनेरियो। इसका लगाया है सर, तो हमने फिर इसका। शेयर करें, सर ये देखें, फिर ये शेयर जो कीजिए slide। नंबर बी के ऊपर ये देखें, ये जो एक पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये ऑलरेडी एक घर के ऊपर एक ये लगा हुआ है सारा यार सिस्टम, नंबर चाहिए, और हमें हमने इसके नंबर्स की ऊपर बात सारी कर लो वर्किंग की है। भाई, नंबर Road cross चाहिए। को pedal. ठीक है, लेट्स गो, लेट्स लेट्स गो। मूव That's फॉरवर्ड सर। Goda चलिए that's a direct mafma issue. ओके। ठीक है, I think सो we आई need थिंक to move वी on. आउट ऑफ टाइम ऑन दिस वन। सो आपको एक या दो चार्ट इसमें ऐड करें, जिसमें आप रेवेन्यू शो करें और बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी शो करें। 1 एकड़ ले लें, 10 एकड़ ले लें, डजंट मैटर, तीनों ऑप्शंस की जो आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो राइट। while we complete the scoring, so source factory, super butler We या can source factory? present Super Butler if ठीक है, आप पहले तैयार हो और हम कंप्लीट करते हैं। sure. Guys, can you hear me and can you see my screen? Yes. Yeah, we can see your screen. Let me know when should I start. Okay, just one more minute, please. Yeah. चलो भाई ना Okay. उधर आ गया बस सकता चलें जी, रेडी, स्टार्ट। Thank you. Hi, everyone. My name is Sharik Malik. I think someone is speaking. Yeah, I just mute them. Yeah, please go ahead. Yeah, sure. Hi, everyone. My name is Sharik Malik. I am the finance director and shareholder at Super Butler Limited. So before we start with Investors Deck, what is Super Butler? We are a B2B SaaS platform that digitize the current hotel concierge services of the hospitality industry, and we arrange seamless operations for them. So the problem for the hotels, inefficient guest service management, which they are using currently. They are losing revenue to third-party delivery platforms like Deliveroo and Just Eat globally, not to any particular country. Staff labor shortages, staff productivity, and as a guest in a hotel, language barrier, international travelers traveling around, delayed responses in their services, and pushing to download an app to receive all the services. Market opportunity. Globally, there are 187,000 hotels, if you exclude Russia and China, obviously, and only 3% of them are digitized. That includes our competitor as well. 97% of the market is untapped, non-digitized, proven by data from Statista. As a solution, very simple for our guest. No app download,
You scan the QR code and all the services will be available on your mobile browser without downloading of any app. Real-time translation into 140 plus languages. We beat third-party systems like Deliveroo and Uber Eats by combining everything in one solution, and you don't have to order anything from any other website, and that revenue can go to the hotel. And as a hotel, no PMS integrations, which are, by the way, very costly. System Super Butler can go live in a hotel in 24 to 48 hours. Overall, real-time analytics for a general manager to see on their mobile, or again on the browser, and upselling, and it can increase the revenue of the hotel or any hospitality as well. As a solution, we provide 3 streamlines. First is the digital concierge. You scan the QR code, you do everything yourself from your mobile. Second, if you don't want to scan the QR code, you can chat with the AI assistant that is inbuilt into the Super Butler as well. And that will do the job for you, whether you want to place the order, whether you want to book a taxi. And if you don't want to chat, you can do it through voice. That is the most recent technology that we have integrated into Super Butler. And you just speak with a voice AI, and that will do the job for you in the hotel. How it works in a very simple 9 steps journey from scanning the QR code and until you receive the notification or the email. If you want to include that, your whole journey will take less than a minute or 2, depending on how tech savvy you are. But overall, it makes your life much easier. Business and revenue model is pretty simple. One-time setup fee of $2,500. That includes setup, onboarding, training, and the QR code printing as well. And with that, a monthly recurring fee of subscription fee of $199. And apart from that, the transaction fee in each order of 45 cents. We have a great global momentum going. As of now, we are live in United Kingdom and North America. We own the IP 100% in both of the countries and making some good traction and sales pipeline in both the countries. Apart from that, we are currently in negotiations and discussions for reseller partnerships for another 6 to 7 countries, but we are taking it slow at the moment and making sure that we have good footprints in UK and US. So far, we've got great traction with more than 5,000 plus orders with brands like Pastana in UK and Ramada in Karachi and Holiday in Dubai. Our competitors are there, but no one is our direct competitors in a way that everyone requires an app to be installed. We do not push our customers to do that. And no one is focusing on the guest. We believe that everyone is focusing more on the hotels, but we are giving the solutions to the guest and saying that we are the Uber kind of a solution for the guest, and considerable price advantage as well if you compare it with the direct competitors. Overall, a strong global leadership team, and from the top 3 of the management have done more than 10 exits. And good thing is that they are involved full time with Super Butler, and with their expertise, we are growing from pre-seed to seed as of now. Overall, our ask is pretty simple. We are aiming to raise for our seed, this seed round, $750,000 at a valuation of $8 million for our expansion in North America and UK. Our plan is pretty simple, to at least generate a revenue of close to $200,000 and for the 12 months, and to get 100 plus hotels onboarded. Our exit strategy for our current and potential investors is to get them 8x returns in 3 years' time, achieve an 80 million, that is 10 times X valuation in the next 4 years, and be profitable by the end of the second year of the business. This is our first year, by the way. And our exit strategy, it's various. Either we can go to the IPO, merge and sell with any big brands, or get acquired by a big hotel chain. We already have offer by the way, by 2 big brands as well, but currently we are focusing only on expansion. Thank you, everyone, and looking to have questions from your side as well. गुड टाइमिंग। आपने रेवेन्यू फोरकास्ट का चार्ट दिया है इसमें। आप खासकर रेवेन्यू बिल्ड कर रहे हो तो आपको कुछ तो आइडिया होगा कि भी 2025 में 26 or 27 you have to put that revenue forecast. We do have the forecast from the business plan. We will include that in this slide as well. जी, we will do that. वो verbally बता सकते हैं कितना आप? Sure, absolutely. It's we are pretty clear. Just say, for example, if you can see on the slide, $175,000 is for the next 12 months. That is 2025, and then
$800,000 is for the 2026. That is for both North America and UK. क्योंकि हम दोनों में expand कर रहे हैं सर. सही. Okay. Yeah, please, question, नहीं भाई. Gee. So you basically said, and I'm trying to understand it, okay, somebody can use your app. Let's just say I'm using your app in US and मैं hotels.com पे जाता हूँ और मैं booking कर लेता हूँ. So do you have interfaces between your app and the hotel's booking system to integrate? How did you handle that part? I'll make it simple for you, my name by. What we do is our journey starts when you check in into the hotel. Everything else for is someone else, booking.com or everyone else. When you Okay. check into the hotel, you make a phone call to place the orders or get a taxi. So our service starts once you check in. You scan the QR code Okay. and So all the services of the hotels are I got digitized. it. I got it. छोटे छोटे जवाब देना ताकि ज्यादा कन्वर्सेशन हो जाए. Sure. So होटल के अंदर आपने चल कर तो टैक्सी वाले को जो अगर आप बुलाएंगे तो आपका उबर के साथ आप इंटरफेस है. How does the taxi person know कि नईम रजा wants a taxi? So we have an open APIs as well, and currently we are not partnered with any Uber or anyone else. So as of now, we are partnered with few rental companies in Pakistan. So they are linked with us, and if anyone books anything, it goes to them. But we can integrate with third-party apps as लेकिन well. आप यूएस में आपने अभी कहा कि मैं यूएस में आके करना चाह रहा हूँ. तो यूएस में तो छोटी छोटी टैक्सी कंपनीज तो बड़ी हैं, उनके साथ तो आप इंटरफेस नहीं कर सकते. तो what's your strategy to get into the US market? So it's pretty simple. What we do, Naeem bhai, that yes, the dining service is one. Well, dining is one service. Like, we keep it open to the hotel as well. If hotel says that you can include some information, for example, if they are partnered with a particular rental company, so we include the email services there. If anyone books anything, email notification pops up or a mobile number is provided. So we give an open platform to the hotel, whatever in whichever way they want it. Currently, हम रमादा में भी यही हुआ है कि उनकी एक रेंटल कंपनी है, उनकी डिटेल्स वहां मौजूद हैं. They provide we need car for 2 days for Karachi, so that goes to the rental company and then they book it. So that's how we're doing it in Ramada as of now. देखें पाकिस्तान में I understand that there are only few hotels and then you can kind of customize the interfaces to those hotels. But if you want to come into US, there are existing players which where people are using Uber, people are using Uber Eats to, or DoorDash and everything. It's a monster that you're gonna be dealing with, and they have already built all those interfaces. So I think you are taking a very simplified approach towards how you're gonna penetrate the US market. My recommendation to you would be to do your homework and try to come up with a pilot project within US, and then you're gonna learn a lot. So just for adding on, Naeem bhai, we already started the pilot project 2 months back. So the 750,000 we are looking to raise. Out of that, 300,000 we are already closed. So with $50,000 from that 300,000, we have started the pilot project 2 months back. So Okay. that is an Good. update from that side. So Good we luck. have 5 hotels, that we are speaking with and are onboarded in New York. Good luck. Okay, Rafiq, what's your question? जी मेरा एक ही क्वेश्चन है. वो आपने एक प्रॉब्लम मेंशन की थी शुरू में कि लैंग्वेज बैरियर्स एंड प्रॉब्लम्स. तो आपकी जो ऐप है वो कौन सी लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करती है? 140 plus languages that includes Arabic, English, Chinese, and you name it. And same with the Spoken or voice AI as well. Oh, okay. Google Same with the voice Gen AI as well. Gen AI Google model पर. इस्तेमाल कर रहे हैं. Yes, Yeah. yes. Our team have taken your classes as well. Excellent. So that has helped us Actually, in creating this AI, stuff we have created. Ansar from our team. the only one question I have, Sharik, जो QR कोड को स्कैन करके एंगेज करना एप्लीकेशन है, वो तो मेक सेंस है, लेकिन QR कोड वहां पे मौजूद होना चाहिए. ठीक है ना? तो So अगर मैं sure. अभी कॉरिडोर में जा रहा हूँ होटल के, या मैं कहीं ऐसी जगह जहाँ पे QR कोड नहीं है, so how I'm gonna get to that application?
Can I give you answer for that, because we are live in Yeah. 6 hotels, 10 hotels in UK, हाँ 5 बिल्कुल. hotels in Pakistan. So what they do, when you check in, they give you the key, and in that key there is a QR code. Then he Oh, give I you see. Okay. another Okay. brochure. There I is a got QR it. code there and in the room मैंने as फिर well. सही है, ठीक So है. that's the magic By of by it. the way, I have a granted patent on it. कि आप एप्लीकेशन नहीं जरूरत आपको अपने मोबाइल पे. You just scan to get the application enabled. Basically, what you're doing. So this is a granted Okay. patent I have in the US Okay. on that Okay. because I found it. That's what I found it very useful because Yeah. getting an application into a consumer device is a hassle, right? And many Absolutely. people they don't download the application. So, but when they need it, you need to enable something. So that was a cool thing. So I applied patent many years ago on that, and then it was Great approved to know. as well. Okay. Masha. अच्छा अनवर साहब हमारे पास 20 मिनट में और 3 और अभी स्टार्ट हाँ ठीक है बिल्कुल. तो इसके कंप्लीट कर लें और फिर नेक्स्ट जो है मैं बता देता हूँ कौन कौन है उसमें. कौन मौजूद है इस वक्त. जराई बरामदात, सोर्स फैक्ट्री एंड मोटो वेस्ट. कौन मौजूद है इनमें से. सर ज़राए बरामदाद. जराई बरामदात, प्लीज बी रेडी फॉर दैट ऑलराइट सर. फॉर योर प्रेजेंटेशन. थैंक यू शराब. Thank you guys. बाय द वे ये अच्छी प्रेजेंटेशन थी ऑन टाइम एंड दैट वाज एग्जैक्टली राइट. और ये जो है ना जैसे चिराग आपने किया था कि छोटी छोटी बात करनी चाहिए और मोटी मोटी बात, क्योंकि जो सुनने वाला भी याद ही ना सकता. बहुत ज्यादा Absolutely. डिटेल्स अगर आप पेश करें, कोई भी पेश करे, तो सबके लिए कह रहा हूँ. चलिए जरा Thank you. Thank रामदास you. आप शुरू कीजिए. रामदास प्लीज स्टार्ट. अब म्यूट पे तो नहीं हो? सर जस्ट अ सेकंड. या ओके. यस आई एम रेडी. ओके प्लीज स्टार्ट. Sir, just a second. It's glitching for some reason. Let me share it again. Sorry. क्या पीडीएफ शेयर कर रहे हो, क्या वजह है जी आप. वैसे ये ज़राई बरामदात वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज नियर एंड डियर टू मी. अगर कोई भी इसमें हेल्प चाहिए किसी को तो आई एम अवेलेबल. ऑलराइट. बगैर सुना आपने कह दिया, जबरदस्त बगैर है. समझ हम ज़राई मुल्क हैं जी. we make a lot of things and we see एब्सोल्युटली lot of एब्सोल्युटली. Indian stuff coming to US market. बिल्कुल सही बात. इवन पाकिस्तानी स्टोर्स में जाएं और सारा प्रोडक्ट इंडिया का पड़ा हुआ इंडिया की नजर पड़ा होता है. बिल्कुल बिल्कुल है. सही बात. सो सैड. सर ज्वाइन फ्रॉम अ डिफरेंट. ठीक है. लेकिन मेरे पता नहीं कुछ ग्लिच कर गया फॉर सम रीजन. और एको भी हो रहा है इस वक्त. एको इसलिए हो रहा है बिकॉज इट्स कनेक्टेड फ्रॉम टू डिवाइसेस. तो उसको म्यूट पे कर देना, दूसरे को वो म्यूट सर पे उसकी कर देना. कीज काम नहीं कर रही. मैं बस रीस्टार्ट कर रहा हूँ. कनेक्टेड फ्रॉम द फोन. यहाँ पे शेयर नहीं हो पाएगा. सो यू कैन टेक समबडी एल्स एंड आई एम जस्ट रिकनेक्टिंग अगेन. आई डोंट नो क्या हुआ है, वो एकदम से ग्लिच कर गया पूरा लैपटॉप. ठीक है. सोर्स फैक्ट्री या मोटो वेस्ट में से अगर कोई है तो वो शुरू करते हैं. आई थिंक लुक्स लाइक बोथ आर मिसिंग. चलो ठीक है जी. फिर हम ज़राई बरामदात का वेट करते हैं. और इन द मीन टाइम मैं सिर्फ ये बाकी दोबारा लोग जो हैं दोबारा कंफर्म करना चाह रहा हूँ, सोर्स फैक्ट्री से तो नहीं है कोई.
Sir, मैं एक चीज कर सकता हूँ. If only I am left, can I send you the PDF and you can share the screen? I'll just explain slide by slide. Really sorry for the inconvenience. Okay, लेकिन yeah. पता नहीं क्यों No, glitch no, कर रहा है. go ahead, do that. Go ahead. Okay, sir. Thank you so much. वो मैं कमेंट ये करने लगा था सबके लिए कि व्हेन यू आर मेकिंग दीज काइंड ऑफ प्रेजेंटेशंस और लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं तो you don't have to like respond to every question. Sometimes you just need to take the question, understand it, and use it to make your next presentation better. Yeah. Yeah, I have very similar comment. एक तो ये है कि आंसर जरा छोटा दें क्योंकि वो पूरी अपनी दोबारा से स्टोरी शुरू कर देते हैं तो उससे फिर वो डायलॉग नहीं हो पाता. Always believe in conversing with your other person, whoever is the investor or your customer or anything. Monologue ना करना शुरू कर दें because when you do monologue the other person checks out. तो अगर किसी ने सवाल पूछा उसका जवाब दें छोटा ताकि वो अगला सवाल पूछ सके. ऑलवेज रिमेम्बर सेल्स 101 में है अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा या आपसे सवाल नहीं पूछ रहा दैट मीन्स योर प्रेजेंटेशन इज यूजलेस. Okay, in order for you to be engaged with somebody, if they are asking questions, they are coming up with objections, that means they are showing some interest. They are interested in your product. They are interested in your services. If nobody asks you question, nobody says that means you wasted all your time. So take So, that as a positive thing. Don't take it as a negative thing. And I've seen that. I think it's probably in Pakistani mindset कि वहां पे कोई सवाल पूछता है तो बंदे को गुस्सा चढ़ जाता है तू मैंने सवाल कर रहे हैं वो माइंडसेट आ जाता है कि मुझे सवाल कर रहा है तेरी इतनी जरूरत कि तूने मुझे सवाल किया. एक्चुअली अगर कोई सवाल नहीं करेगा तो दैट मींस इट्स इट्स Sir, I've no, दे आर shared. नॉट Sorry, sir, इंटरेस्टेड. cutting you. आपने I व्हाट्सएप have. किया है कि ईमेल जी किया है मुझे अनुसार. ये क्या मैंने आपको किया ईमेल नहीं करा, व्हाट्सएप किया मैंने आपको. व्हाट्सएप किया तो मुझे व्हाट्सएप तक मैसेज मिला नहीं. अच्छा, कैन यू टेल मी द ईमेल? तो आपको ईमेल भी कर देता हूँ. नहीं मैं दोबारा से चेक कर लूँ व्हाट्सएप जो है अब शायद पहुंच गया हो. आ गया. सही है 1 मिनट में इसको ओपन कर लूँ. यही है ना. जी सर, यही है. ठीक है इसी तरह चलते हैं. ओके प्लीज स्टार्ट. So my name is Sharuzalian. I'm the founder and CEO of Zarai Baramdad. Can you change the slide? So can you change the slide, please? I'm sorry. So we started working as a traditional trader in the agriculture market. While working that, we saw some gaps in which particularly farmers were not able to export their produce on their own. The main reason for that was their production quantities. The average holding land in Pakistan is not more than 5 to 8 acres, because of which they are not able to fulfill the requirement of sea shipment containers, which requires 29 tons to be put into that container. So in this, middlemen and exporters take the advantage of it. They buy it from multiple farmers, consolidate their produce, and send it to the premium markets, where they're buying it on the local rates and selling it on premium on the international markets. नेक्स्ट स्लाइड. So can you guess? Yeah, just पर नेक्स्ट बोल दिया करें मैं कर दूं. Okay, sir. Okay. The solution which we have come up with is shared container concept, in which multiple farmers can combine their produce and they can export that produce to premium markets. How is that possible? Multiple farmers can give us the request of picking up the produce from their farmland. It would be our responsibility to pick it from their farmland, sort it, grade it, pack it, ship it to the international markets, and ensure their sales in those markets also. As the market in GCC also operates on a mandi basis, the similar concept which is being run in mostly all of the British colonized countries in the world. Next up. The customer, sorry, we are looking towards what our customers are falling in Punjab mostly.
And as I mentioned earlier, they do not have access to the international markets. So our shared container model gives them access to the international markets, and to ensure the transparency with the farmers, we wish to enable the similar model on which Park Wheels also work, जिसके अंदर वो एक जो रिपोर्ट गाड़ी की बना के देते हैं, उसी तरीके से वी विल बी शेयरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन इन स्टेप बाय स्टेप विद द फार्मर्स कि किस वक्त उनकी प्रोड्यूस कहाँ पे मौजूद है, उसमें से कितनी फसल उनकी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स के लिए निकली है, कितनी उनकी क्वालिफाई नहीं कर पाई एक्सपोर्ट्स के लिए और लोकल मार्केट के अंदर बिक रही है बिकेगी. सो इन ऑल दीज स्टेप्स वी विल बी शेयरिंग दीज थिंग्स विद द फार्मर्स. Can you go to the next, please? The market opportunity in Pakistan, total addressable market for fruits and vegetable category is $891 million. These were the exports of Pakistan in 2023. The SAM, which we are targeting, is for Punjab mainly. That is $200 million, and SOM for us is $5 to $10 million, which we are looking to get from 267 farmers, which we can get from 267 farmers, and there are 5.25 million farmers alone in Punjab. Next. Our revenue model is very simple and easy. We charge 5% commission fees or service fees from the farmer on the produce we sell in the international market. If their produce is making 100 rupees in the international market, we'll be charging a 5% service fee for facilitating all of the supply chain. Most of the expenses are on the farmer, so it makes us very scalable and sustainable. Next. For the traction and achievements, we have been working in the agriculture industry for past 3 years. We partnered up with Bazaar Technologies, one of the leading startups in Pakistan, being their fruits and vegetable supplier for Karachi, Lahore, and Islamabad. And we have exported 3 containers, 1 to Oman and 2 to UAE. We have recently raised an investment by Extrade Prosperity. We presented ourselves in a UNESCO 10th meeting happened in Uzbekistan, and we recently won Shell Tamir Awards in Women Empowerment category as on 2nd position. Our competitions are traditional traders or exporters in Pakistan. They are mostly focused towards singular commodity. For instance, Anchor Fruits mentioned over here, they just work in citrus fruits, as their all supply chain is established in citrus fruits only. Saramco is mostly focused towards potatoes, and Bhandari is mostly focused towards onions. So they do not have diversified portfolios, and they do keep the ownership with them. So the farmers are not able to earn that premium on it. So next. Our marketing strategies, we have offline and online, both marketing strategies. These are online strategies in which we will be creating content through YouTube, as there are multiple YouTubers in this niche who are educating farmers in Pakistan, and they have a lot of viewership. So we see potential that we can gauge our customers, our farmers, through YouTube and short content in TikTok and Instagram, by telling them how they can take advantage, and educating them also of how to get more production, more yield from their farms, and telling them more effective and efficient techniques. So next. This is our team, me, Sheroz Ali, founder and CEO. I've been working for the past 9 years in multiple businesses. Previously, I was running a leather business, which was established by me, and we did we used to export orders, and we used to do white label manufacturing for multiple brands. Ariba Ali, she is currently working in Zemdar offices. It's a co-working space in Canada. Hassan Sohail, he's currently working with AbhiPay. And Mohammed Abu Bakr, he's currently working with SadaPay. Abu Bakr is CTO, sorry, Hassan is CFO, and Ariba Ali looks after marketing and strategy. Next. So these are projected financials. In 2025, the GMV we are looking at is $2.1 million, which goes up to $5.7 million by 2028, in which our revenue would be $109,000 and our net income would be $39,000 for 2025. And for 2028, that's going to be $83,000. So we are seeing a year-on-year growth of 72%. Next. Our ask is for $100,000, for which from that we'll be putting up a sorting, grading, and packing line. That's going to cost us $33,000. The rent and utilities for 6 months are $6,300. Licensing and registration in UAE, that is $9,100. Then salaries, marketing, and contingencies.
The offer we are giving against this $100,000 is 12% equity. Our current valuation after closing the investment with X-Ray Prosperity, we have gauged it at $800,000. Thank you. Great. I'm gonna stop sharing here. Thank you, sir. Questions? तो दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने बोला है कि आप एक्सपोर्ट जो है उनकी बेचेंगे भी, तो do you have relationship with other countries where you're gonna sell that? And so that's, so let me pile up all the questions so I have a chain of thought over there. So that is very important to know. दूसरा, अगर आप सेल कर रहे हैं उनके, तो 5% commission is a very low commission in order to go through the whole process. So that's the second point. The third is कि आपका रेवेन्यू जो है या आपका जो है वो बहुत स्लोली ग्रो कर रहा है, कि यू आर शोइंग ओनली 5 to 10% ग्रोथ एवरी ईयर। अगर आपको फंडिंग करवानी है तो वी लुक एट 2 to 3 times ग्रोथ एवरी ईयर। So I think your revenue, your business model needs to be tweaked because it's not showing revenue growth. 5% of commission of doing everything is too low. And then what about relationship in other countries? So those are my three concerns. Yeah. अगर मैं भी नईम साहब उसके ऊपर ऐड कर दूं एक दो और चीज़ें जो आपने बताई, रिलेशनशिप वाली बड़ी अहम चीज़ है। दूसरी जो आपने बात की ना कि आपके कंपेटिटर्स सिंगल कमोडिटी में डील करते हैं, तो देयर इज एक्चुअली अ रीजन फॉर दैट। इफ यू आर डीलिंग इन मैनी commodities, it is going to be very difficult to manage that business. Yeah. So starting with a single commodity, then growing it after that, later on with adding one more and then adding another one and so on. That is how you are going to make the business. 5% वाली जो नईम साहब ने बात की, ये 100% दुरुस्त है, इससे कभी भी बिजनेस आपका नहीं चलेगा. It is too low. It is अच्छा, not going to make money. to answer this Yep. question for the Yeah, please. 5% वाली चीज, it comes from the mandi, which hold on a we have. second. Hold on a second. Yeah, yeah. Let me finish my thought. Okay. क्वेश्चन मेरा ये था, ये सिर्फ कमेंट्स हैं, यू डोंट हैव टू आंसर दोस वन. क्वेश्चन मेरा ये था कि जो फार्मर है उसको आप कब पे करेंगे? जब आपकी कमोडिटी सेल हो जाएगी या जिस वक्त आप उससे पिक करेंगे उस वक्त आप पे करेंगे? अच्छा, पहले मैं अगर मैं नईम साहब का आंसर दे दूं फॉर द 5% वाली चीज एंड द ग्रोथ वाली चीज. सो द ग्रोथ हैज इज 72%. इट्स नॉट 2 to 3x, बट इट्स नॉट 5% के करीब, वो 72% ग्रोथ है एनुअल बेसिस के ऊपर. अच्छा, ये भी वो है जो हम लोग बहुत ही मिनिमम तरीके से ग्रोथ को अगर देखें, क्योंकि हम लोग पंजाब के अंदर सिर्फ 267 फार्मर्स को टारगेट कर रहे हैं आउट ऑफ 5.25 मिलियन फार्मर्स. अगर हम लोग इसको सक्सेसफुली रन कर लेते हैं तो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही हमारे पास फार्मर्स इतने खुद होंगे कि ग्रोथ हो जाएगी. हमने बहुत फेयर तरीके से ग्रोथ प्रोजेक्शंस करी हैं, हमने उसके अंदर बहुत ज्यादा नंबर्स को नहीं जोड़ा. एक एंड सेकंड होल्ड 5 करें, अनवर शेयर करें जरा इनकी रेवेन्यू की स्लाइड. एक मिनट. I don't see 72% growth. हाँ, ये देखें, अब आपका रेवेन्यू 109 से 151 हुआ है, 208 हुआ है, 287 हुआ है. 50% growth है, and then maybe 30% growth है या 25% growth है. और आप देखें और फिर फिर आपकी नेट इनकम भी 39 से 37 हो जाती है, कम भी हो रही है. So your numbers are not very impressive. That's the point I'm making. आप उसमें उसमें ये गलती कर रहे हैं कि आपने जो भी बात कही है कि आप 267 को फोकस कर रहे हो सिर्फ फार्मर्स को, वो अभी कर रहे हो ना, तो 2024 और 2025 में पॉसिबल, बट यू हैव टू इंक्रीज दैट नंबर in 2026 and then 2027, 2028. Why would you stay with 267 farmers only? वरना तो नो, आप ग्रो ही नहीं करो. इट्स नॉट, वी आर नॉट स्टेइंग विद दोस. हम लोग उसको 10% के हिसाब से हमने अपनी जो फाइनेंशियल्स रखे हुए ना उसके अंदर हमने ग्रोथ ये तो दिखाई है बहुत थोड़े हैं 10% के यार. साथ. आपको ग्रो करना ज्यादा ज्यादा फास्टर करना पड़ेगा. ये तो बहुत ठीक है. थोड़ा है. और आप अच्छा सर, उसके ऊपर ये आई फोकस करो आई कि जस्ट रन अ आपने कैलकुलेशन अभी एक आल्सो. मिनट एक जी मिनट जी, कंप्लीट कर लो सॉरी. बात को, जी जी. कि आप उस पर फोकस करो कि कैसे स्केलेबल बनाना है. क्योंकि जब ग्रो कर रहे हैं कि वो जब स्केलेबल बना लेते हैं, इसका मतलब ये है कि
आप नया कस्टमर जब भी साइन अप करें उसमें एफर्ट कम लगनी चाहिए, उसको सपोर्ट करने में भी एफर्ट कम लगनी चाहिए, आपका प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। तो ये चीजें आपको अभी से सोचना होंगी ताकि फिर आप उसको तेजी से ग्रो कर सको। तो वो आपकी कॉस्ट भी कम होगी, कॉस्ट भी मेंटेन करने में और ज्यादा भी आपकी ग्रोथ। ये चीज सोचना बहुत जरूरी है, स्केलेबिलिटी। या प्लीज गो अहेड। राइट सर। मैं आप अच्छा कुछ कह फॉर रहे नईम थे? साहब, अभी मैंने हाँ। कैलकुलेटर पे अभी भी जो मैंने कैलकुलेशन करी है तो मेरे पास 72% नहीं आ रहा है, वो 109 से 151 पर, और वो 72% ही जा रही है ग्रोथ। सो अच्छा सॉरी, एंड फॉर द Let's not 5%, litigate that. Quickly, वन quickly answer. yeah छोटा yeah yeah जवाब. yeah I just need to address that 5% वाली चीज mainly. 5% वाली चीज कम फ्रॉम द फैक्ट कि जो पाकिस्तान में मंडियां ऑपरेट कर रही हैं, इवन इन इंटरनेशनल मार्केट्स, वो 5% कमीशन के ऊपर चार्ज करते हैं, जिसपे फार्मर को आदत है काम करने की। और हमारे कोई ऐसे एक्सपेंसेस नहीं है, अगर हम ग्रेडिंग सॉर्टिंग कुछ भी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, वो चार्जेस सारे के सारे फार्मर के ऊपर जाते हैं। वी डिडक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स इनकम, जो कि हमारे थ्रू जनरेट होती है जब हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं। सो हमारा जो अपने एक्सपेंसेस हैं, दोज आर मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस एंड द सैलरीज व्हिच वी आर पेइंग ऑफ टू द टीम। ठीक है, अब इसका भी आपने जवाब नहीं देना, जरा इसके ऊपर गौर करना है। आपने जितनी भी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं आप इंटरनेशनल हम्म मार्केट में ले जाने के लिए, हम्म आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो सारी वैल्यू आप फार्मर को ट्रांसफर कर रहे हैं, और आप अपने लिए उसमें से वही चीज ले रहे हैं जो मंडी वाले ले रहे हैं। 5% ही आप चार्ज कर रहे हैं, तो देयर इज नो दैट बेनिफिट फार्मर इज फॉर आल्सो यू। इजी। अगेन जवाब नहीं देना, मैंने इसलिए पहले कहा था वी सॉरी डोंट नीड टू लिटिगेट सॉरी। दैट। दूसरा मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि फार्मर को आप कब पेमेंट करेंगे? In 18 days for the जब exportable पिक करने के goods, बाद? and for the local goods that's going to be in 2 days. ठीक है, तो तो आप आप जो 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 वर्किंग कैपिटल होगा वो आप खुद अरेंज करेंगे उसके लिए? For those 18 days, उसके अंदर जो वर्किंग कैपिटल हमारी साइड से जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी टुवर्ड्स ओनली शिप एंड फ्रेट्स। बाकी सारा कुछ हम लोग, क्योंकि जो लेबर रेट्स, लेबर को भी जो पैसे जा रहे होते हैं, दैट्स इन 15 डेज। जो हम लोग कस्टम क्लियरिंग एजेंसी से साथ काम करें, दैट्स दे वर्क ऑन अ मंथ क्रेडिट। तो वहां पे हम लोग को उनको फौरन पैसे नहीं देने, तो हमारा वर्किंग कैपिटल वहां पे भी नहीं फंस रहा। बेसिकली व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ ट्रेडिशनल ट्रेडर, जिसके अंदर मैं फार्मर से खरीद के एक्सपोर्ट करता था, उसके अंदर मेरे पास सबसे बड़ा हर्डल ही वर्किंग कैपिटल का आता था कि मैं 10 कंटेनर कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं 11वें पे जाऊंगा तो मेरे पास वर्किंग कैपिटल खत्म हो जाएगा। साथ साथ मैंने फार्मर का पेन पॉइंट देखा कि फार्मर तो कभी एक्सपोर्ट करके प्रीमियम कमा ही नहीं पाता। टू सॉल्व बोथ ऑफ दीज प्रॉब्लम्स फॉर माई सेल्फ एंड फॉर द फार्मर, मैं आई केम अप विद दिस मॉडल, जिसके अंदर मुझे वर्किंग कैपिटल की जरूरत ना पड़े और फार्मर को भी उसकी इनकम मिले। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि द डे यू पिक गुड्स फ्रॉम फार्मर विद इन 18 days यू वुड बी एबल टू शिप इट, सेल इट इन इंटरनेशनल मार्केट, गेट द मनी बैक, ट्रांसफर इट Yes, टू, so all of that would happen within and we 18 have days. done that before. Okay. इंटरेस्टिंग। ठीक है। वैसे इस मॉडल की जरूरत तो बहुत है, पर यह है कि आप इसको बड़े फोकस तरीके से सोचो कि कैसे स्केलेबल बनाना है और इसको ग्रो करना है। अगर ग्रो नहीं किया तो फिर क्या फायदा ऐसे बिल्कुल सर। सर्विस का जो है। और फिर देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट लेने के लिए भी आपने बहुत पता जरूरी नहीं है। कहाँ बिजनेस किया है जहाँ पे आपको 18 दिन में ये सारा कुछ हो जाता है। ये भी यूएस बहुत के डिफिकल्ट है अंदर मेरे लिए। हाँ, बिल्कुल यूएस ये के बात। सर अंदर हम जीसीसी। बेचते हैं, हमने यूएस में बिजनेस करते हैं। 30 डे से या 60 डे से पहले तो कोई पेमेंट के लिए तैयार ही नहीं होता, कोई ऐसा बायर ही नहीं मिलता। कोई भी आप भेज दें चीज 30 to 60 डे, और फिर उसमें बैड डेट भी कितने परसेंटेज हो जाता है। तो ये आपको माशाल्लाह, आप हमसे ज्यादा समझदार लग रहे हैं इस मामले में, लेकिन आप जरा दोबारा सोचिएगा, क्योंकि आई डू नॉट नो वेयर यू डू बिजनेस वेयर यू कैन कलेक्ट तो एवरीथिंग इन तो 18। लेट मी आस्क दैट क्वेश्चन, क्योंकि ये सवाल बहुत जरूरी है जो नईम भाई रेस कर रहे हैं। कि जो आप शिप करते हो, क्या वो कैश ऑन डिलीवरी है जो शिपमेंट है? सर आई विल टेल यू द होल प्रोसेस ऑफ 18 दिन। हमारी हाँ। मेन मार्केट जो है वो जीसीसी है। जीसीसी के अंदर अलवई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट है यूएई के अंदर, वो पूरी जीसीसी को री एक्सपोर्ट करती है। दैट्स द मेन मार्केट बेस्ड इन यूएई दुबई। सो अगर हम पंजाब में कोई प्रोड्यूस फार्मर से प्रोक्योर कर रहे हैं, या फिर वो हमें दे रहा है अपनी फसल से, इन डे वन वील गेट दैट इनटू आवर फैसिलिटी इन पंजाब बेस्ड इन कसूर। वहां पे हम उसको ग्रेड सॉर्ट पैक करेंगे, उस प्रोड्यूस को उस फैसिलिटी के 100 किलोमीटर रेडियस में जितने भी फार्म्स है ना, वील बी वर्किंग विद दोस फार्मर्स मोस्टली। सो वील ग्रेड सॉर्ट दैट, मेक अ कंटेनर। जो कंटेनर 3 दिन के अंदर कराची पोर्ट पे पहुंचता है,
कराची पोर्ट की 1 दिन की क्लियरिंग होती है, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है तो वो प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर उसको क्लियर करते हैं। तो ये हो गए आपके 5 दिन। 3 दिन फिर उसके लगते हैं फ्रॉम कराची पोर्ट टू जबल अली पोर्ट इन यूएई। ये हो गए आपके 8 दिन। 9वां दिन आपके यूएई की क्लियरिंग का, दैट्स 10 days। 3 days आपको पार्किंग एक्सेस मिलता है अलवी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट के अंदर, जहां पे कैश पेमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अगर आप लूलू, कारफोर और अगर इन ब्रांड्स के साथ काम करो तो दैट्स 90 days का क्रेडिट या 60 days का क्रेडिट। बट वहां पे बहुत से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्मॉल बायर्स और इस तरीके के लोग होते हैं जो कि मार्केट के अंदर खरीद के और आगे अपना काम कर रहे होते हैं, वो क्रेडिट बेसिकली दे रहे होते हैं। तो वी आर सेलर्स टू दोज पीपल हु आर बाइंग इट ऑन कैश इन दैट मार्केट। सो तो 15th बेसिकली डे के कैश ऑन ऊपर, डिलीवरी हो गया ना फिर तो। यस 15th एंड 16 डे, एज हमें कंटेनर भी 15वें दिन वापसी करना होता है, क्योंकि 16वें दिन पर हमें डैमेजेस लगने शुरू हो जाएंगे। तो 15 डे के ऊपर हम ये पूरी साइकिल को कंप्लीट करके एंड 18 डे के अंदर हम वो पैसा फार्मर को प्रोसेस कर सकते हैं, और जो कि मुझे भी 18वें दिन पे ही मिला है जब मैंने 3 कंटेनर्स एक्सपोर्ट करे। सही। और ये जो सिनेरियो ये कि लिमिटेड तो नहीं है कि भी एक सॉरी। खास रेवेन्यू के बाद, ये जो सिनेरियो आपने ड्रॉ किया है जहाँ पे वहां पे जो इंडिविजुअली कैश पे कर देते हैं, वो लिमिटेड मार्केट तो नहीं है कि भी नहीं ये वो सर। एक का ना। हाँ सर मेनली जो उस- पुराने वहां पे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि वो एज आई मेंशन वो री एक्सपोर्ट मार्केट है, तो वो लोग खरीद के, वहां पे बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि मार्केट से खरीदते हैं और फिर वो दूसरी दूसरी कंट्रीज के अंदर, जीसीसी के अंदर उसको री एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। सो ठीक इट है। मेक्स इट इजियर फॉर अस टू सेल ऑन कैश। ठीक है। और फिर वो जो दूसरी वो लुलु के को डायरेक्टली बेचना वगैरह, जब आप कुछ जी। ग्रो कर रहे हो उस वक्त आपका वर्किंग कैपिटल यू कैन गो ऑन टू दैट एज वेल एट दैट टाइम। लेकिन जो यस। मेन जो चीज है, एक तो अगेन अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंतहाई जरूरी है पाकिस्तान के लिए। और आई थिंक ऑल द गुड लक फॉर यू, बट यू वी मस्ट हैव नीड टू वर्क अट्रैक्टेड फ्यू इनटू कस्टमर्स दीज आल्सो। डिटेल्स ऑफ। हाँ वो वी बताइए हैव कि 2024 का रेवेन्यू क्या है, आपने उसका कोई जिक्र नहीं किया। सर, इट्स $30,000 जिसके अंदर हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स करी हैं ऑलरेडी। और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ कंपनीज के साथ एमयू साइन करें जिनके फार्म्स हैं 15-15, 20-20 एकड़ के इनिशियली, जो इसकी फसल वो हमारे साथ दिसंबर के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड मेनी ऑफ द प्रोग्रेसिव फार्मर्स, ये तो मैं स्मॉल और मीडियम साइज फार्मर्स को फोकस कर रहा था, लेकिन बाय लक जब से मैं इकोसिस्टम का पार्ट हो रहा हूँ स्टार्टअप के पाकिस्तान के, और उसके अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी फार्म लैंड होल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, 300 एकड़, 1000 एकड़, इस तरीके की हैं। जब मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ तो दे हैव बीन शोइंग वेरी मच इंटरेस्ट, एंड दे आर सेड कि हमारी जब फसल तैयार होगी तो नहीं वी नहीं विल बी टेकिंग इंशाल्लाह आई रेट्स थिंक फ्रॉम यू। यू विल बी सो वहां सक्सेसफुल। से भी हम लोग रेवेन्यू काफी जनरेट कर बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल सही, यू विल बी सक्सेसफुल, बट जस्ट मेक श्योर दैट इंशाल्लाह। you streamline the processes, make it scalable, highly scalable, and go थैंक यू for सो a मच। bigger target. Go for a bigger target, not small target. अगर आप बड़ा सोचोगे तो बड़ा पहुंचोगे, और ये याद थैंक यू सो रखिए मच सर। हमेशा। वैल्यू ऐड के ऊपर फोकस करें इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्सपोर्टिंग, और नॉन पेरिशेबल के बारे में ज्यादा सोचें। तो स्लोली पेरिशेबल एंड ग्रेजुअली पहले हम चाह रहे हैं कि इसको अपने पैसा फंसाए बगैर कुछ एक स्केलेबल और सस्टेनेबल मॉडल बिल्ड कर लें। फिर उसके बाद इन चीजों के अंदर भी आई टेक रेफरेंस फ्रॉम अमूल ऑफ इंडिया। अमूल इज अ फार्मर कोऑपरेटिव, उनका वर्किंग कैपिटल इतना ज्यादा नहीं आता, फार्मर का ज्यादातर उसके अंदर दूध आता है, वहां से वो कमोडिटीज बनाते हैं जिसके अंदर फार्मर की ही परसेंटेज होती है। सो वो मॉडल भी मुझे बहुत पसंद है कि अगर आप वैल्यू ऐड भी कर रहे हो तो उसके अंदर भी आपका अपना वर्किंग कैपिटल इतना ज्यादा नहीं फंस रहा, जो अमूल करता है इंडिया के सही है। अंदर, एंड दे आर 8th लार्जेस्ट poultry milk company in the world. ठीक है। So I वहां think से we भी are we are over taking time. benefit. We over time again. Yeah. Doesn't reflect an Inshallah, you know, interest आपके उसमें, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आपका वो प्रोपोजिशन है। yeah. तो Thank you, sir. और माशाल्लाह आपको समझ भी है, which is very important. एब्सोल्युटली So build on it, Inshallah, sir. increase your percentage of your share, because you can grow very big, inshallah. Thank you, sir. ओके, थैंक Thank यू you वेरी so much. मच। Thank you. तो इसका हम कंप्लीट कर लेते हैं स्कोर, और फिर आई थिंक वी शुड जस्ट फिनिश। ये लास्ट लाइन का टोटल नहीं आ रहा ये आपके फॉर्मूले में, हाँ वो भी मेरे भी नहीं आ रहा, वो मैं कर लूंगा फिक्स कोई बात नहीं। वो कर ठीक लीजिएगा। है। हाँ ठीक है। एक्सलेंट। शुक्रिया अगेन नईम भाई एंड रफीक साहब। तो इंशाल्लाह बाकी आप लोगों को अल्लाह स्टिक ताला अराउंड, आपको एंड अजर इज दे ऑलवेज गुड टू अनवर, हेयर। यू आर डूइंग ए वेरी गुड वर्क। अल्लाह ताला आपका एक्सेप्ट करे, आपको अजर भी इंशाल्लाह ताला, दे। इंशाल्लाह ताला। इट्स नॉट बस आप इजी। लोगों की सपोर्ट चाहिए, और नहीं भाई आप रियली अप्रिशिएट दैट थिंग, यू आर गोइंग इनटू दैट मोड एज वेल, and spending 4 hours or actually almost 5 hours between the 2 weekends. So excellent. Really appreciate that thing, Rafiq and Naeem bhai as well. And all of you guys who stuck around. It could be
it's good to hear other people's pitches as well and to learn from them as well कि भी क्या ज्यादा बात करनी है क्या ज्यादा बात नहीं करनी वगैरह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू द पॉइंट रखें तो इंशाल्लाह ताला फिर और बात होगी ओके अल्लाह जी, हाफिज अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम